Okay. Welcome, sir. Welcome, sir. So BC sir has joined. Professor Vijay Singh sir has not joined, I think. Yet. Okay, I will call Vijay Singh sir and check. EVS से किसी ने हाँ Professor Vijay Singh sir will join within 3 minutes. So I think we should wait for 3 minutes and then start the program. ठीक है, अच्छा है, 3 मिनट गप्पे करेंगे। जी सर। हालांकि सर उन्होंने कहा है कि हमें कुछ करना तो है नहीं, तो सर फिर उसके बाद मॉर्निंग में कल प्रोफेसर एसएल शर्मा आईआईटी खड़गपुर से होंगे सर, और प्रोफेसर थरेजा सर बोलेंगे सर। अच्छा, ये सब क्या रिसर्च टॉपिक्स पे रिसर्च टॉक्स होंगे? सर नहीं, प्रोफेसर थरेजा सर तो उन्होंने तो दिया है कि कनेक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड थियरी इन फिजिक्स, तो जनरल ही बोलेंगे। ओके, वेरी गुड। वो कब है सर? वो कल है 12 से 1 सर। अच्छा, ओके, कोशिश करूंगा ज्वाइन करने का। जी सर। कोशिश करूंगा। फिर सर डे आफ्टर आपके सेशंस 11 बजे से 1 बजे तक होंगे सर? हाँ, वैसे मोस्टली 11 से 1 और शाम को सर 5 से 7, और उसके अलावा अगर कोई पार्टी से कोई अगर स्पीकर 4 से 5 में भी है तो उसको एडजस्ट कर लिया है, और शाम को उसके बाद में भी। जी ओके। द्विवेदी सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज हाँ, क्लियर आ रही है ना? ओके। तो सर प्लीज लेट मी नो व्हेन टू स्टार्ट। So I think after 1 minute you can start. Vijay Singh sir has said that he will join within 2-3 minutes. So maybe it's 11:04, 11:05 you can start. Okay, I'll start at 11:05. Sir, 2-3 से 23 भी होता है और 2-3 से 5 भी होता है, 2-3 से 2.5। Vijay Singh sir has joined. Yeah, he has joined. Oh, wonderful. Yeah. Okay, sir, I'll start. Wonderful. Sir. You start. Yeah. It is not allowing me to. वीडियो नहीं शेयर हो रहा है। जी सर, ये वीडियो वाला मेरा ऑन नहीं हो रहा है। ओके सर, आई थिंक सर आज अभी आप फर्स्ट में नहीं है ना? वी नीड टू ट्रांसफर। नहीं मैम, आपने स्क्रीन शेयर की है, प्लीज उसको बंद कीजिए। आशीष पीपरा सर से कीजिए, ऑफ करें। आशीष प्लीज। नाउ यू कैन। Okay, sir, shall I start, sir? Yeah, you can start now. Yeah. Okay. A very good morning to all of you. Good morning, sir. Honorable Vice Chancellor Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Uttar Pradesh, and Chief Guest of the occasion, Professor Vinay Kumar Pathak ji. Guest of honor, Padam Shri Professor H.C. Verma, IIT Kanpur, Professor Vijay A. Singh, Homi Bhabha Center for Science Education, and National President, Indian Association of Physics Teachers. Special guest of the occasion, Principal, Christchurch College, Kanpur, Dr. Joseph Daniel, Director, Pranveer Singh Institute of Technology, Kanpur, Dr. Sanjeev Kumar Bhalla, Director, Feroz Gandhi Institute of Engineering and Technology, Raebareli,
and distinguished attendees. I, Dr. S.P. Singh, welcome you all on behalf of the entire organizing committee to the inaugural function of the one-week faculty development program on current trends in physical sciences, organized by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Indian Association of Physics Teachers, a regional council for UP, in association with Precious my College video is not launching. It says I don't have permission or something from my camera. Should I log? क्या करना होगा मेरे को? Aparna ji, please see to it. Neha, Professor Vijay Singh is not able to unmute. Sir, I have requested him to start his camera. Your camera is not launched properly. I think, Dr. Vijay Singh, there is a problem in your camera. In your laptop camera. Your camera is not launched properly. Check browser media settings. You need क्या करना होगा? to join again. Switch off करके एक बार switch on करिए please. कल तो नहीं. एक बार restart लीजिए please, Dr. Vijay. कैसे जाना होगा? Restart लीजिए please. Sir, leave the meeting and rejoin again. Camera settings and okay. I'll go to settings. Dr. Vijay Singh, hello. हाँ, म्यूट तो कर दिया. नहीं, म्यूट की नहीं है. आप जो है इसको फिर से डिस्कनेक्ट होके एक बार लीव द मीटिंग एंड अगेन कनेक्ट इट. आप फोन से बता दीजिए राजेश जी. अच्छा ठीक है. Yes, sir. I have shared the same information here. No problem. Okay. Shall I continue with this, sir? Shall I continue? Please. Yeah, you continue. Yeah. Okay. So again, I, Dr. S.P. Singh, welcome you all on behalf of the entire organizing committee to the inaugural function of the one-week faculty development program on current trends in physical sciences, organized by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Indian Association of Physics Teachers Regional Council for Uttar Pradesh, in association with Christ Church College, Kanpur, PSIT Kanpur, and FGIET Raebareli. We are all facing an extraordinary situation of COVID-19 pandemic, which was foreign to us a few days back, and now it has spread its roots countrywide. Being in scientific community, we have social and democratic responsibility in the current situation to become more empowered, creative, and innovative. This faculty development program is intended to provide a platform for imparting, sharing, and experimenting various developments and trends in physical sciences, and also focusing on understanding the upcoming challenges with possible direction to identify a solution. With these words, I now request Dr. R.K. Dwivedi, President, IAPT, Uttar Pradesh Regional Council 4, and Head of the Department Physics, Christ Church College, Kanpur, to formally welcome our guests and present the outline of this faculty development program. Dr. R.K. Dwivedi. Thank you, Dr. S.P. Singh. Very, very good morning to you all. Respected guest of the inaugural function, our distinguished chief guest, Honorable Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Professor Vinay Kumar Pathak, sir, our guest of honor, keynote speaker, and two of my respected gurus, Padma Shri Professor H.C. Verma sir from IIT Kanpur, and Professor Vijay Singh sir, who was initially at IIT Kanpur and now at HVCSE Mumbai, National President IAPT. The special guest of today's function, the principal of our college, Christ Church College, Kanpur, Professor Joseph Daniel, Director PSIT, Professor S.K. Bhalla sir, Director Firoz Gandhi Institute of Engineering and Technology, Professor R.P. Sarma, member of the National Executive Committee, IAPT. आप देख रहे हैं कि नहीं मुझको, वही मैं जानना चाहता हूँ. Yeah, we can all see you, sir. You are visible, sir. You can see, okay. Can you hear us, sir? You can see, no, that is important. Yeah. Okay.
So the principal, Christ Church College, Kanpur, Professor Joseph Daniel, Director, PSIT, Professor S.K. Bhalla, Director, FJIT, Professor R.P. Sarma, Member of the National Executive Committee, IAPT, Dr. Anil Kumar Singh, Secretary, IAPT, UPRC4, Dr. Sundar Singh, distinguished participants of the Faculty Development Program, friends, ladies and gentlemen. First of all, I take this great opportunity to welcome you all to the inaugural function of Faculty Development Program on current trends in physical sciences from today till 28th of July 2020. It is a joint collaborative academic mission of Indian Association of Physics Teachers Regional Council 4, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Christ Church College, Kanpur, PSIT, Kanpur, and FJIET, Raebareli. Friends, as we all know that faculty members play a most important role in transforming knowledge to the students and thereby shaping their career. The institution which are on the top today have best faculty members who keep themselves updated with not only the changing curriculum, but also the advancement taking place in science and technology day by day. There are many educational institutions who are finding it difficult today to maintain the educational standards, as providing the state-of-art infrastructure alone is not enough, but having right faculty is equally important. Faculty development program is nothing but a faculty training program. They are proving to be successful in improving the knowledge and the professional skill of the faculty member and thereby enhancing students' learning. In today's scenario, it's very important to learn several online teaching tools, e-content development, etc. for our survival. Also, till now, I have seen in last 35 years, we teachers used to teach the students the basic. Now with the online mode of teaching, the teaching contents and also the method of delivery to the students will be open to the public. It opens another challenge to learn the subject better and conceptually understanding it. This faculty development program will provide a platform for all our faculty member friends and students to enrich their knowledge and teaching skills, to understand physical sciences conceptually better, to know about recent developments, and an opportunity to interact several experts of national and international repute. There will be 14 technical sessions, 2 each day, with 2 to 3 presentations, followed by a discussion session. There are 22 national and 9 international speakers from reputed institutions all over the globe who will share their great knowledge with all of us. In this faculty development program, we are going to hear about several exciting topics such as challenges of online education, organic-based biosensing, bioelectronics, tight binding modeling, density function theory modeling, optoelectronic property of multi-layer thin film structure, radiation measurements, ultra-fast laser spectroscopy, role of physics experiments, virtual lab, etc. It will be a great opportunity for both teacher friends and my dear students, that is all of us, not only to learn, but interact with the resource persons, thereby gaining knowledge, changing our mindset, and the most important, keeping us away from the corona infection fear also in the coming 7 days. I am sure that we are going to enjoy these 7 days with a lot of new learning about the recent trends in physics. To end up, I will quote the Benjamin Franklin. He has said, "Tell me, I forget. Teach me, I remember. And involve me, then I learn." So I will request all dear friends to involve to learn better. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. We are extremely fortunate to have amongst us the Honorable Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow, Professor Vinay Kumar Pathak, as chief guest, who, despite his busy schedule and prior commitments, has kindly accepted our invitation.
We are extremely thankful to him. Before joining Dr. APJ AKTU Lucknow, he has been the Vice Chancellor of Uttarakhand Open University Haldwani and Vardhaman Mahavir Open University Kota, Rajasthan. He has served as an academic as well as administrative member in various public and private institutions, committees such as IGNOU, RUSA Uttarakhand, Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur, Rajasthan, Madhya Pradesh Bhoj Open University, Rajasthan Knowledge Corporation Limited, to name a few. Since his tenure as the Vice Chancellor of AKTU, his paramount importance has been to enhance research activities in the campus. As an able administrator of few words with a clear vision and a mission, his mentoring is of great value to the betterment of science and technical education. I feel great pleasure in inviting you, sir, to address the August gathering on this occasion. Vice Chancellor, sir. It's a great pleasure for me to be present in the August gathering of physicists in this morning. Honorable Professor S.C. Verma Saab, Professor Vijay Singh Ji, Professor R.K. Deveri Saab, my other colleagues from colleges, Dr. Bhalla and the Professor R.P. Sharma Saab, and all other August people present in this webinar and the faculty development program, which is there for the next 7 days. It's a great pleasure for me to listen and to be in the August gathering of Professor Verma and Professor Vijay Singh. As all of listen their name, we start thinking in physics and we start thinking of that what is physics and what is the kind of a problem we have. I think before this, my tenure of the Vice Chancellor as AKTU Lucknow, I was the Vice Chancellor in Kota University. Kota was not famous for my university. Actually, it was famous for coaching, and I have got an opportunity to meet thousands of young graduates from IITs, NITs, who are trying to solve the physics problem. Actually, one day I traveled with one of the owner. It was not like a physics kind of a thing which we see in Kanpur, because I belong to Kanpur, so I have seen both the models of coaching physics. But I was traveling with one of the owner who teach physics. Actually, it was a great thing to know that most of the Kota coachings which are there, and most of the owners are teaching physics. So they solved Irido problems. They have made the kind of the solutions of the Irido, which at our time we used to buy from MIR publishers, Current Book Depot at Kanpur, but it was very difficult to have the solutions of those kind. But those people were great, and I have seen young guys solving the physics problem from class 8th. So so much kind of a thing, so much kind of knowledge in physics they have. Actually, my son now he's doing MS in Duke University, but he always tells me, "Daddy, अगर आपने physics नहीं सीखी तो आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी." So physics is one important thing which drives everything. He works in photonics. He works in artificial intelligence, which is the new area where the new microscopes are inbuilt with the artificial intelligence. But he always suggests that if you don't know physics, then it's not good for you. You should always go back and understand the fundamental problems. So the other kind of the contrary thing which I have seen for a very, very long time, I am not seeing the physics teachers as they were when we were studying in classes. We were, now the physics teachers are more or less, they are doing their, as a Vice Chancellor, once we are recruiting them, they are trying to do their MSc physics, some net qualification, some PhD thesis, and some other kind of things. But they are not passionate as we have seen, and they are also not living with physics. So we have seen the teachers and the stalwarts who used to try and live with physics.
try to solve the problems. And that story I was telling, that the owner of the physics kind of the person was having 100 books on physics. So I said, what is he? Said, when I travel for a long distance, I used to make questions. In Kota, I have learned that every teacher of physics has to make 50 questions daily, on a daily basis, new questions they have to make. And every month they get IIT professors, as they have got a lot of money. They get some IIT physics teachers from the IITs and get their question paper done. And all of the people, including the owner, has to give the exam and write the exams of physics, chemistry, maths, and all those things. Although I am against those kind of coachings personally, and as I see, but I have learned a lot that if our students in class 12th knows a lot of kind of a physics and they are able to solve the problem, one of the contributions are from the books and the materials which is available with these kind of an institutions which has built for a long time. The second important thing which I am seeing the recent current trend, and I am very happy because I am a computer science guy, although I am not a great physicist like Professor Verma, Professor Vijay Singh, and Professor Dwivedi, but I have got a lot of interest. But now I am seeing that there are new trends and new people who have made a lot of good online lectures on physics. There are students who are pursuing their technological degrees. There are students who are pursuing, there are guys who are doing coaching institutions. So a lot of new videos have come, which are very, very helpful to understand the things. Yesterday, my young kid, not my young kid, my brother's young kid was there. He's not able to understand the vector problem. So he went, there was a teacher who used to teach class 11, 12. So he just typed on Google, what are the best viewed things on vectors? So he has taken one thing which the guy teaches free of cost and understood what is the kind of a vector. So the new students I am seeing are in a very different direction to understand physics or understand the problem from the online lectures. I think I don't know, but I want to say, Rajesh Dwivedi, that if we want to take the physics on a front runner, first we should encompass our society with all the new guys who love physics, who are physics teachers should be there. They have done their degrees, MSc, NET qualification, or all other GATE qualification and all other things. They should be the part of the thing. But you should have some society where it is also there for physics lovers, because the students and to me always the people who love the subjects do more kind of a help to the subject rather than the people who are very, very structured in nature and have got the degrees from some of the universities like us or somewhere the stamped kind of a people. So who does not, so those people, if they come, and the second thing which this society, because this society has done a lot of intervention, I am seeing, and I am also very passionate because happy to see that my alma mater HBTU, Professor Khandelwal, I have not seen Professor Khandelwal, but I have read physics, studied physics from Professor Nigam, he was there, and Professor DNS Srivastava, late, he is not there, both have actually demised. But I have seen the kind of thing they have got. He said, I have worked with Bohr, so come to the lab. So I have seen those eyes in which there was thing for physics. See, look into those physics, that how we can solve the physics problem. I think the new generation is shifting very, very fast. So they have got very new ideas to teach. And I think it's very, very important to also make a new society. So the new society cannot be only with the people with degrees. The new society will be of the people who love also the subject. It is actually true for everything. As all of you know, that the most of the artificial intelligence, most of the new technologies which are there in the society are not developed by the people of computer science. They are developed by the people of biology. They are developed by the people of music. They are developed by the other people. So I think this is a new direction where a lot of new material has come. In fact, a lot of
people who are amateur in nature are also dedicated for physics, and it's a high time we should make this society in which you are doing so much kind of a great lectures, try to get them also into the society, make some kind of I think changes in the society so that they can also come and they can also teach the physics teachers. Anyway, gone are the days, and the corona has also taught us one new thing, that the knowledge cannot be only delivered in brick and mortar structures. So once the brick and mortar structures are closed for a long time, still the knowledge persists. Still we are here on the webinar thing. So the knowledge creation or the knowledge cannot be stopped by any of the thing. So it cannot be contained only by structured kind of a people. So it cannot be only done by physicists, or it cannot be only done in the institution or in like university like us, or like in the physics department. So no more the physics department, no more kind of a thing. So we should try and get those inputs, get those good video lectures also for the kind of physics. One important thing which I can contribute, we have got 2 wonderful studios. In fact, IIT Kanpur has also one good studio, but AKTU has got 2 good studios, one at Lucknow and other is at Noida. And we have got wonderful shooting things. We are also trying to do a lot of kind of a MOOCs work, and we are also trying to do things on a virtual kind of thing. I will request all of my faculty members who are attendees of this thing, it is good that in this workshop, there will be no lunch, there will be no dinner, and there will be no bags. So it is good that you can spend your time in creating knowledge and understanding the knowledge. But my feeling is always that they should be evaluated, all the physics teachers. And with this kind of things, I want to thank Professor Dwivedi, who has done a wonderful work, and Professor Verma, who is coordinating this kind of thing. He is also a member of society. All the people from 22 countries, they are participating. This is a great initiative. I want to thank all FDP attendees who have attending from my university and all other people. You should have this wonderful 7 days, remembered 7 days kind of a workshop. But my thing at last will be, I really want to make some new community which do things online and make physics so much kind of an interesting physics that it goes to everybody. And as we remember, everybody cannot live without physics or without understanding physics. I think this is a great opportunity when there are 2 stalwarts of the society. We can think in the new direction, and after COVID-19, there is a new normal at everything. So let the physics also feel the new normal and encompass everybody who try to do this kind of physics. So my best of luck to all of you for this great, wonderful FTP program. And I want to take blessings from Dr. Verma, Dr. Vijay Singh, and all other seniors for the university and for myself. Thank you very much. Thank you, sir, for your words of wisdom and encouragement. And I must again thank you for sharing your experience and thought with us. Thank you, sir. It is a proud moment for all of us to have the principal, Christ Church College, Kanpur, Dr. Joseph Daniel with us. I invite you most cordially, sir, to bless us on this occasion. Dr. Joseph Daniel, sir. Thank you very much. Respected dignitaries and my dear friends and students, a warm good morning to all. In this digitized and artificial intelligence world, a teacher is the single most effective human interface that influences a student's holistic development other than parents and siblings. The traditional role of a teacher, the well-informed and trained person in a particular subject, trying to impart that knowledge to the next generation, is gone. The new role in a world where all kinds of information and misinformation is freely available,
would be to select the present, the best, authentic, accurate information in an easy, understanding, and engaging way. For this, a teacher has to be open-minded to accept the limitations and take the aid of all available resources, including technologies, to keep themselves current. Regardless of the subject one teaches, everything has a right way and a wrong way of implementation. A teacher must explore all the possibilities and should train the students to use the vast amount of information for general good instead of just accumulating all the knowledge without any ethical framework. Today's world, education should promote original thinking so that the students can show real world experience and humanistic values. The teacher should encourage the students to find their own solutions to the problems they come across instead of just imparting what is prescribed in a textbook. This kind of teaching is possible in all subjects, but it is very difficult to standardize and test. It can only be done by teachers who are disciplined and dedicated to themselves. This outlook can only be implemented through frequent orientation and training programs. Teachers are always students and lifelong learners. Faculty improvement programs help the teacher to understand the current developments in the educational program. Hence, I wholeheartedly appreciate the effort made by the organizers of the faculty development program on the current trends of the physical sciences. Thank you and welcome each one of you to the FIB program, and I wish all the best for the coming program for 7 days. Thank you once again. Sir, please unmute yourself. Thank you, sir, for your kind words. Am I audible to everyone? Yes, you are audible, sir. Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you, sir. Thank you, Daniel, sir, for your kind words. And I must say that your indomitable personality always inspires us to do things better. Now I invite Dr. Sanjeev Kumar Bhalla, Director, Ranveer Singh Institute of Technology, Kanpur, Uttar Pradesh, to say a few words about this program. Dr. Bhalla, sir. Good morning, everybody. I think the host is not allowing me to show myself. My video has been locked. It's perfectly fine. Still, I would like to share my thoughts with all of you. As a co-host institution, PSIT, it's my profound privilege to first of all extend a very warm welcome to Honorable Vice Chancellor, AKTU, Professor Vinay Pathak ji, who has graced this occasion with his benign presence. Sir, I take the audacity on this platform to express my feelings here in public. It's been a privilege to work under your able stewardship. I have learned so many things from you, and I always look forward to your guidance and blessings in future. I would also like to express a heartfelt thanks to Professor H.C. Verma, Professor Vijay Singh. They are those dignitaries who probably don't require any introduction. All of us, the engineering fraternity, probably have read their books. All of us are aware of their knowledge. All of us are indebted to them for laying down the foundation for us. As it is said that engineering, physics is the mother of engineering. The engineering fraternity is indebted to physics as a profession. In this period of difficult times, the whole world, the whole society is looking at us technocrats to come out with solutions. And I congratulate IAPT for organizing such for this initiative that they have taken. And it's not only restricted to experts from India. The people from the whole world are there.
to share the knowledge. And I'm sure this will lay the perfect platform for everybody to share their ideas and knowledge and come out with useful solutions, which is really very, very important in these difficult times. So I congratulate everybody, and I also extend my best wishes to all the participants for this event. Thank you very much. Thank you, sir. Now I invite Professor R.P. Sharma, Director, Feroz Gandhi Institute of Engineering and Technology, Rai Bareli, Uttar Pradesh, to say a few words on this occasion. Professor Sharma, sir. Hello, I'm audible? Yeah, you are audible, sir. Yes, I'm Dr. R.P. Sharma, Director, Feroz Gandhi Institute of Engineering and Technology, Rai Bareli. I welcome on behalf of my institute, Chief Guest of today, Dr. Vinay Pathak, and distinguished guests, Dr. S.C. Verma, Dr. Vijay Singh, and all other distinguished speakers. This is a really privileged time for all of us that all the physics teachers from the India as well as international speakers. I have been told there are 22 national speakers and 9 international speakers. So today's deliberation are not limited for today, but this is a 7-day faculty development program. All the deliberations will be continued till 7 days. We are really lucky to be among the organizers, and we are really, I will be eager to hear Dr. S.C. Verma and Dr. Ajay Singh. I have been a alumni of Christ Church College. At that time, Professor Indu Prakash of physics was my teacher. So I am quite lucky in that way that a teacher of the stature of Indu Prakash ji has told me about the basics of the physics. So I again welcome all in this seminar, and I request all the physics teachers to be a part of this faculty development program. As Dr. Bhalla has rightly said, that physics is the mother of all engineering branches. So in that sense, I also respect all the physics teachers and try to learn the basics of the physics, basics of engineering from physics teachers. I again welcome all the participants as well as our distinguished speaker, Professor S.C. Verma, Professor Vijay Singh ji. Thank you. Thank you, Sharma sir. I think that with this, we come to the end of the inaugural session of the program. Hello, I am audible to everyone? Yes. Yes, sir. Now we will continue with our first technical session. I would like to request and invite Dr. A.K. Singh, Head of the Department, Biophysics, Electronics and Computer Applications, Ewing Christian College, Prayagraj, Uttar Pradesh, and the Executive Member, Indian Association of Physics Teachers, to chair the first session. This platform is now yours, sir. Dr. A.K. Singh, sir. Thank you, sir. And good morning to everyone. In the first technical session, I feel very privileged to have our speaker, Padam Shri Professor H.C. Verma, sir. It is our tradition to introduce the speaker amongst the audience, but in this particular circumstances, I feel there is no need to say anything about H.C. Verma, sir, because whatever I will say, that will be incomplete. So for these incomplete words, I have to say, I have to welcome Professor H.C. Verma, sir. Professor H.C. Verma, sir, joined IIT Kanpur in 1994. He obtained his doctoral degree at Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been an nuclear experimental physicist
whose chief interest lie in the condensed matter and materials applications. He was also worked on nanocrystalline magnetic materials and alloy systems, and also in earth science problems such as meteoroids and extinct boundaries. He has authored several books, including a 2-volume book that is Concept of Physics, Volume 1 and 2. As earlier Professor Vinay Pathak sir has said in the quota, the physics people always have these 2-volume books. Not only the physics teachers, but all the students of the competitive stream, that is either engineering or medical or in science, they used to study about this book. So this one is a very famous book. These 2 books are very famous. And apart from this, sir has tried to write the books for students of class 9 and 10 also. So that is a great job for the society to enhance the physical concepts. And apart from this, sir has composed quantum physics at college level, and currently working on electrostatics, magnetostatics, and electromagnetics for UG students. The corona pandemic gives the time and encourage to do something on the online webinars. So sir has given lot of materials on this online platform before the corona, and amongst them he has given online courses by Nuclear Physics Fundamental and Application on NPTEL, Learning Physics Through Simple Experiments, MOOC, massive online open course in 2016, Physics of Semiconductor, massive online course 2017. Sir, in this program, I also joined because of the semiconductor physics. Sir, BSc course in Hindi 2018, Basic of Simple Special Theory of Relativity, then Fundamental of Quantum Mechanics in Hindi on 15th August 2019, Advanced Course of Special Theory of Relativity on 26th January 2020. So these peculiar 2 dates, so the starting of this relativity and this quantum physics on the time of 26th January and 15th August was itself a very highlighted. And then classical electrodynamics in Hindi on 15th August 2020. It is the proposed course, and we will very eagerly waiting for this course. Co-founded Shiksha Sopan for the special upliftment of the children of economical weaker section living near IIT Kanpur campus, initiated new project, National Anveshika Network of India. Sir, the very famous NANI. NANI, there are 2 meaning of this NANI. Both are very favorable for the students. In 22 cities in India, 1,000 schools, colleges getting benefit from this project. nani.hcbburma.in, competitions on physics experiment. National Anveshika Experiment Skill Test, NAEST, Maulana Abdul Kalam Azad Shiksha Puraskar 2017. And last but not least, it is the superb Padam Shri, 4th highest civilian award of Government of India in 2020 is in his credit. So with all these words, which are very incomplete, I request Professor A.C. Burma sir, please enlighten in this faculty development program for the benefit of the physics stakeholders. Sir, I request you, sir, please start.
Sir, please unmute, sir. Sir, his mic is your muted. ओके, धन्यवाद अनिल जी। जी सर। जैसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो दिए हैं वो हिंदी में दिए हैं बीएससी के स्टूडेंट्स के, और अगला आने वाला कोर्स भी जो आपने अभी बताया कि 15 अगस्त से आने वाला है वो भी हिंदी में ही होने वाला है। तो मैं आज की जो वार्ता है वो भी हिंदी में ही करना चाहूंगा, आप इजाजत दें मुझे इसके लिए। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। ओके, तो जैसे अभी अपने आदरणीय वाइस चांसलर साहब ने बताया कि बहुत तेजी से परिदृश्य बदल रहा है, और हम लोगों ने 50 वर्षों से एक महारत हासिल की थी पढ़ाई लिखाई कराने में, कि कैसा ब्लैक बोर्ड होता है, कैसा क्लासरूम होता है, किस तरह से हम स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम उनके चेहरों को पढ़ते हैं, कैसे हम एक एक के मन के भावों को जानते हैं, उनके एक एक एक्शंस को देखते हैं। इसके अंदर में बहुत लंबे समय से इस प्रक्रिया से गुजरने के कारण बहुत सारे जो हमारे शिक्षक हैं, बहुत उत्साही शिक्षक हैं, उन्होंने इस विधा के अंदर में अच्छी महारत हासिल की हुई थी। लेकिन अब इस नई परिस्थिति के अंदर में अचानक से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और ये ऑनलाइन का शब्द जो है वो बहुत जबरदस्त ढंग से सामने आया है, और इसलिए इसके साथ में ट्यून होना, और इसके साथ में इसकी जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, इसके जो स्ट्रेंथ्स हैं, इसके जो वीकनेसेस हैं, उसके अनुसार अपने को ढालना, ये एक बहुत बड़ी समय की चुनौती भी है, मांग भी है। और इस तरह के नए परिवर्तन जब होते हैं, तो जैसे अपने प्रोफेसर विनय जी ने कहा कि जो ट्रेडिशनल डिग्री होल्डर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन उतना शायद नहीं होता है जितना कि उस सब्जेक्ट के प्रति जिनमें डेडिकेशन है, भले ही उसकी डिग्री ना हो, तो उनकी एक अलग बढ़िया सी सोसाइटी हो और वो सब मिल करके काम करें, ऐसा उनका सजेशन बहुत मायने रखता है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स है, उसकी मेंबरशिप किसके लिए खुली हुई है, तो नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिजिक्स टीचर्स के लिए ही खुली हुई है। जो भी कोई फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है वो इस एसोसिएशन का लाइफ मेंबर बन सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये एकदम शुरू से खंडेलवाल साहब का विजन था, और इसके अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं। अपनी IAPT का जो अन्वेषिका प्रोजेक्ट है, उसमें अब 26 अन्वेषिका है इस समय में, और उसमें एक अन्वेषिका ऐसी है जिसके कोऑर्डिनेटर बायोलॉजी के शिक्षक हैं। तो यद्यपि वो बायोलॉजी के शिक्षक है, वो MSc इन बायोलॉजी हैं, बॉटनी या जूलॉजी हैं, परंतु फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट इतना अधिक है कि वो एक पूरी की पूरी अन्वेषिका को लीड कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने हमें सुझाव दिया था, IAPT पूरी तरह से उसके साथ चल रही है, और जितने भी इस प्रकार के फिजिक्स लवर्स होंगे, फिजिक्स एंथुसियास्ट्स होंगे, वो जरूर IAPT के अंदर में जगह है अपनी बनाएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे इस नई टेक्नोलॉजी के साथ में जीने की। तो आज के लिए जो मैंने बातें सोच के रखी हैं इस सत्र में कहने के लिए, वो इसी ऑनलाइन दूसरे ढंग से पढ़ाना, दूसरे ढंग से IAPT की जो एक्टिविटीज है, टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स करना, ये एक्टिविटीज में अब किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, किन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसी के ऊपर ये वार्ता है। और अगर आप अब मुझे इजाजत दें तो मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूं। सर प्लीज। ठीक है, मेरा स्क्रीन आता है क्या? यस सर। स्क्रीन आ रहा है? यस सर, परफेक्ट। ओके, मेरे ही पास नहीं आ रहा है, देखता हूँ एक थोड़ा सा समय दीजिए। यस, हाँ, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, ऑनलाइन एजुकेशन? हाँ, यस सर। हाँ, तो मैं इसी की बात करूंगा, और अनिल जी ने बहुत कुछ बता दिया है इसके बारे में। मेरी जर्नी जो है ऑनलाइन एजुकेशन की 2016 से शुरू हुई है, और उन्होंने सारी चीजें बता दी कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज किए। ये सबसे पहला जो मेरा था, जिसमें कि हमने लर्निंग फिजिक्स विद सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ से शुरुआत की थी। 2017 में मेरा रिटायरमेंट था IIT कानपुर से, और जाने के पहले मैंने ये सोचा कि इसके बाद मुझे ये सीखने का मौका नहीं मिलेगा कि ये ऑनलाइन कोर्सेज होते क्या हैं और कैसे किए जाते हैं, और
इसमें क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और कैसे हम उसको इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। एग्जाम दिया है, भरा फॉर्म भरा है सर, बाकी सब यहाँ तो बेसिकली तो केवल एंट्रेंस एग्जाम वालों का ही एडमिशन होता है। होस्ट सबको म्यूट कर दे सकते हैं काइंडली। तो ये मैंने अपने खुद के विकास के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के बाद अगर मुझे सीखनी है तो यही मौका है। तो 2017 के पहले मैंने इसके बारे में पूरी जानकारियां करके पहला कोर्स ये दिया और बहुत सारी चीजें वहां से सीखी। और उस कोर्स में 54,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। हालांकि अंत में इम्तहान के समय तक कम बचे थे और बहुत सारी उसकी एनालिसिस हुई कि कितने कम क्यों बचे। और उसमें से एक बात आई कि अभी भी नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है रिमोट एरियाज के अंदर में, ताकि वो वीडियो प्ले हो सके उनके मोबाइल्स के ऊपर। तो खैर वहां से जर्नी शुरू हो करके फिर उसका लाभ उठाकर मैंने बीएससी के सारे कोर्सेज दिए जो कि अभी इन्होंने बतलाए। और इस वर्ष 2 बड़े कार्यक्रम जो कि हम करते रहे हैं हर साल, उसमें से एक है नेशनल वर्कशॉप ऑफ उत्साही फिजिक्स टीचर्स। ये एक प्रकार से हमारे लिए शिक्षकों की एक फौज बनाने का और ये उद्यम है। ये 6 दिन का कैंप है जो कि हम लोग कानपुर में हर साल करते हैं और बड़े चुन करके देश में जो बहुत उत्साही फिजिक्स टीचर्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है नेशनल वर्कशॉप ऑफ उत्साही फिजिक्स टीचर्स। तो ऐसे चुन करके 30-35 लोगों को साल भर हम लोग ढूंढते रहते हैं और फिर उनको एक साथ इकट्ठा करके 6 दिन तक खूब सारी फिजिक्स करते हैं। वहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी की भी बात करते हैं, फिजिक्स की भी बात करते हैं, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट, ढेर सारी टेक्निक्स, ढेर सारी थियोरी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मिसकॉन्सेप्ट खत्म करना, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। और दूसरा एक जो नेस्ट की अभी बात कही, नेशनल एनवीसी का एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, ये भी हमारा हर साल का कार्यक्रम IAPT का है। इसमें भी हमारे सभी 26 एनवीसी का कोऑर्डिनेटर्स बहुत जबरदस्त ढंग से और ये करते हैं कार्यक्रम। यही पीरियड होता है। इन दोनों को हम लोगों ने इस साल कैसे हैंडल किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे एक 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिएगा। मैं अनिल जी से इजाजत मांगूंगा कि एक बहुत अर्जेंट काम है मेरे को, एक 10 मिनट का समय लगेगा। आप प्लीज इस मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए, मैं 10 मिनट के बाद ही आपको फिर से ज्वाइन करूंगा यहीं पर। मैं मीटिंग को छोड़ के जा नहीं रहा हूँ, लीव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक 5 से 10 मिनट का समय मुझे प्लीज। ठीक है सर, ऑल राइट। सर मुझे लग रहा है ये वही उत्साही टीचर्स वाला कोर्स है जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। maybe Yes sir, I think, I hope so. So as sir said, sir has started this journey online education on 2016. Before the retirement of his own from IIT Kanpur, he has to learn all the technical aspect of the online platform, how to start this online platform and go through the participants there amongst the rural area and urban area. So sir, we are not so much interested in this learning and teaching of this online mode, but due to the corona pandemic we are thinking about this work because of the continuous extension of lockdown, from lockdown 1, lockdown 2 and successive lockdown. And then in the beginning of May of this year, I think it is 15 or 16th May, we call Professor Vijay Singh sir for his advice and his blessings. अच्छा अनिल जी, अनिल जी, yes sir, continue sir. Yes, मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं फिर से ब्रेक लूंगा एक 5-7 मिनट के बाद। Okay, fine sir, please. Okay. तो ये मैं आपको NWPT और NAST में क्या हो रहा था ये सब बातें बताता हूँ। जो कुछ लोग अनम्यूट किए हुए हैं क्या, उसको जरा ध्यान दे दीजिए, बहुत सारा बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाजें आ रही है। तो जो BSc के कोर्सेज हैं उनमें से मैं शुरू करता हूँ। क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं इस ऑनलाइन सिस्टम के, जिसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और जिसका हम पे फायदा उठाना चाहिए इसको इम्पैक्टफुल बनाने में। तो सबसे पहला तो है कि हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं अगर वो ओपन टू ऑल हैं,
कहीं से भी उसको देखा जा सकता है। तो जो हम एक 50 लोगों को या 40 लोगों को पढ़ाते हैं एक बार में, उसकी जगह हम 50,000 और 40,000 को भी पढ़ा सकते हैं। तो हमारे बीएससी के कोर्सेज जो अब तक हुए हैं, जो अनिल जी ने सारे नाम बताए हैं, उसमें अमूमन 20 से 25,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है और उन्होंने एक साथ उतने सारे लोगों ने पढ़ाई की है। तो एक ये चीज अपने को ध्यान में रखने की है कि इसे बिग स्ट्रेंथ। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे समझ में आता है इसके अंदर में, वो है ये जो फोरम डिस्कशन का मामला है। ये फोरम डिस्कशन, ये जो चीज है, ये इस कोर्स के अंदर में अगर ठीक ढंग से उसका सॉफ्टवेयर सेटअप किया गया है, जैसे आईआईटी कानपुर ने किया है मूकिट प्लेटफॉर्म, जिस पर मैं अपने कोर्सेज देता हूँ, तो इस डिस्कशन के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई है जिसमें कि स्टूडेंट्स अपनी बातें कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं लिख करके, टाइप करके, और बाद में दूसरे लोग इंक्लूडिंग द टीचर्स एंड इंक्लूडिंग अदर पार्टिसिपेंट्स, वो सब उस पर जवाब दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है, ये बहुत ही बड़ी सुविधा है। और मैं सभी कोर्सेज में, बीएससी के जितने कोर्सेज मैंने दिए हैं, सभी कोर्सेज में रफली औसतन 9 से 10,000 प्रश्न पूछे गए हैं 15 घंटे के कंटेंट में। एक कोर्स का कंटेंट सामान्यतः 15-16 घंटे का हुआ करता है और आधे घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो 30, 32, 35 लेक्चर्स का होता है कोर्स। उस 15 घंटे के कंटेंट में 9 से 10,000 प्रश्न पूछे जाना, ये आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन है। अगर मैं अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वही कोर्स बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो 15 घंटे के कंटेंट में 30 लेक्चर्स भी अगर आधे घंटे का दूं मैं, हालांकि 40-45 मिनट 50 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, तो आप सोचिए कि एक लेक्चर के अंदर में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2, 3, 4, उससे ज्यादा तो नहीं पूछे जा सकते। तो कुल मिला के पूरे कोर्स में अगर 100 प्रश्न पूछ लिए गए तो वो बहुत इंटरैक्टिव सेशन कहलाएगा, इंटरैक्टिव कोर्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ उसी 15 घंटे के कंटेंट के अंदर में 10,000 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव अंतर भी है, केवल क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव अंतर है। क्लासरूम में जब किसी स्टूडेंट के मन में आपके लेक्चर के समय में कुछ आता है और वो कुछ पूछना चाहता है, तो उसको अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने में कुछ तो लगता ही है समय, उसके लिए सेंटेंसेस चूज करने में और उसको पूछना शुरू करने में कुछ तो समय लगता ही है। और जो भी लगे, बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स है, बहुत जल्दी सोचता है, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, उसके लिटरेचर अच्छा है, तो भी उसको 5 से 10 सेकेंड तो लग ही जाते हैं। और 5 से 10 सेकेंड में जो लेक्चरर है, जो लेक्चर चल रहा है, वो आगे बढ़ता है और उस 5 से 10 सेकेंड में अच्छी इंटरेस्टिंग बातें अगर आ गई तो वो विद्यार्थी अपना प्रश्न भूल जाता है और उस अच्छी बातों को सुनने लगता है और हमेशा उसका डबल माइंड रहता है कि मैं इसको सुन भी रहा हूँ और अपना प्रश्न भी फॉर्मुलेट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे प्रश्न जो बच्चों के मन में आते हैं वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, उनको समय नहीं होता है कि वो उसको फॉर्मुलेट करके वहां रख सके। और टीचर के पास भी समय नहीं होता है सुनने का, वो भी जैसे ही प्रश्न सुनते हैं वैसे ही तुरंत उत्तर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं होता है कि उसके ऊपर थोड़ा मंथन करें कि ये पूछ क्या रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, क्या बीच में गड़बड़ क्या थी जिसके लिए ये पूछ रहे हैं। तो दोनों तरफ से कठिनाइयां हैं और इसलिए बहुत शॉर्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत शॉर्ट में उत्तर दिए जाते हैं और समझ गए ना, इज इट ओके कर लिया जाता है और बच्चे अपना सिर हिला देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हैं ये कहने के लिए कि हाँ सब कुछ ठीक है। और इस 10,000 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, समझिए कि उससे डबल लोग उसका उत्तर देते हैं। तो ये जो इतने 15-20 हजार 25 हजार इतने जो उत्तर मिल रहे हैं वो मैं नहीं देता हूँ, ये कौन देते हैं? वही जो हजारों पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे को उत्तर देते हैं। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी एकेडमिक एक्टिविटी होती है, आपके 1 घंटे के लेक्चर के बाद कितनी बड़ी एकेडमिक एक्टिविटी होती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोग सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं और टीचर्स भी उसके अंदर में शामिल है। ये जो स्ट्रेंथ है इस ऑनलाइन कोर्सेज की, इसको आप जरूर ध्यान में रखें जब कोई प्लान करें, जब कोई चीज करें। पीयर लर्निंग, ये जो एक दूसरे को स्टूडेंट जवाब दे करके करते हैं तो वो लर्निंग कहीं ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है और बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वो एक अलग
लेवल है उसका। और जब आपस में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ में डिस्कशन करके सीख रहे हैं और सीखने के लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल अलग किस्म का इम्पैक्ट होता है। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर में हम लोग एक पीयर लर्निंग की बात भी हमारे पास में एक स्ट्रेंथ के रूप में। अब मैं आता हूँ इधर जो नेशनल वर्कशॉप ऑफ उत्साही फिजिक्स टीचर्स का मामला है। तो इस साल हमने इससे जून से और 11 जून ऐसा हमने ये वर्कशॉप किया, NWPT किया। ये हम लोग नासी के साथ मिलकर करते हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया इलाहाबाद है, उसके साथ मिलकर के ये प्रोग्राम करते हैं। और इस बार हमने ये 11 दिन का प्रोग्राम 1 जून से और 11 जून तक किया और बहुत अच्छे अनुभव आए। ये मेरा पहला अनुभव था कि इस प्रकार का जो एक टीचर्स वर्कशॉप है वो हम कैसे करेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म के ऊपर। इतना अच्छा अनुभव आया कि मैं खुद आश्चर्यचकित था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत तरह के सेशंस हुए, बिल्कुल बाकायदा ब्लैक बोर्ड लगा करके प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर अभी कह रहे थे रोडो के प्रॉब्लम्स, हम लोग जो प्रॉब्लम्स अब फॉर्मुलेट करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। और वो वीर प्रकाशन के समय जिस तरह के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, अब हम लोग खुद उस प्रकार के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट करते हैं। और इस वर्कशॉप के अंदर में बाकायदा हमारे पटना के रिसोर्स पर्सन संतोष कुमार जी, उन्होंने बड़े अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और मैकेनिक्स के प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करके एक एक प्रॉब्लम के ऊपर इतना इंटरैक्टिव सेशन लिया है जिसकी कि हम फेस टू फेस में भी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो लार्ज सेटअप डेमोज है ये एक अलग किस्म की चीज है कि जब हम टीचिंग करते हैं तो हम हमेशा IIPT में इस बात को, खासकर अन्वेषिका में इस बात को कहते हैं कि भाई अगर आप टीचिंग करने जाते हैं क्लासरूम में तो आपके पास कुछ तो भी होना चाहिए हाथ में जिसको कि आप लाइव वहां पे दिखा सकते हैं, खास करके स्कूल्स में अगर आप कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे अगर आप कर रहे हैं। और वर्कशॉप्स अगर करते हैं हम टीचर्स के तो वहां भी इस प्रकार के हम डेमोज करते हैं जिससे कि हम उनको ये मैसेज दे सकें कि क्लासरूम में कैसे इन चीजों को लाइव दिखाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग डेमोज किया करते थे फेस टू फेस वाले वर्कशॉप्स के अंदर में, उसमें हम अपनी टेबल के ऊपर रखने के लिए, जहाँ क्लासरूम में वो होती थी वर्कशॉप, एक छोटा सेटअप लेके जा सकते थे। लेकिन इस बार के NWPT में 2020 में डॉक्टर BN दास जो कि अपनी IIPT के बहुत सीनियर वर्कर हैं और वेस्ट बंगाल RC के प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने पूरा का पूरा लैब में एक बड़ा सेटअप इंटरफेरेंस था और उसके फ्रिंजेस कैसे बनते हैं वो आराम से पूरा कैमरा इस पार से उस पार घुमा करके सारा सेटअप दिखा दिया और कैसे उन्होंने उसको असेंबल किया है और क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो ये फेस टू फेस वर्कशॉप में हम नहीं कर सकते थे। तो ये एक नई किस्म की चीज निकल करके आई कि अच्छा अगर हम जूम पे या इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ये एक नई चीज लेके आ सकते हैं। फिर ये कलेक्टिव मॉनिटरिंग, ये भी मेरे अनुभव में आया। मैं एक सेशन दे रहा था इस NWPT में और उस सेशन का टाइटल था डोर की फिजिक्स। जो दरवाजा होता है हमारे घरों के अंदर में, उस दरवाजे से क्या क्या फिजिक्स हम सीख सकते हैं और क्या क्या एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं और किस किस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हम वहां से बिल्टअप कर सकते हैं, उसके ऊपर एक सेशन था। तो हमने किसी खास परिस्थिति के अंदर में एक प्रश्न पूछा कि इधर कितना टॉर्क होगा, कोई एक प्रश्न पूछा और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको हमने कहा कि आप अपने अपने चैट बॉक्स में जाकर के उसका उत्तर लिख दीजिए। मिनट भर के अंदर में सारे चैट बॉक्स के अंदर में उत्तर आ गए और मिनट भर के अंदर में हमने देख लिया कि अच्छा हमारे 40 पार्टिसिपेंट्स में से 25 पार्टिसिपेंट्स ने ये उत्तर दिया है, 7 ने ये उत्तर दिया है, 5 ने ये उत्तर दिया है। गलत कहाँ जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ गलत है, नहीं है। अब फेस टू फेस मीटिंग के अंदर अगर 40 लोग होते और वहां पे अगर हमने इस तो करने की कोशिश की होती कि किसको क्या समझ आ गया और कौन सा क्या उत्तर देता है, तो हम कितने लोगों से उत्तर लेते, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से उस सीरीज में मामला चलता, वो 15 मिनट लग जाते हैं हमें उसके अंदर में। लेकिन यहाँ हमने एक चुटकी के अंदर में समझ लिया कि अच्छा हमारे 25 लोगों के कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, तो उसके अनुसार अपने लेक्चर को मॉडिफाई किया। तो ये एक नया हमारे पास टूल है कलेक्टिव मॉनिटरिंग का। और उसके बाद बहुत सारा जो इंटरेक्शंस है जो हम फेस टू फेस में कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा इंटरेक्शन हम कर पाए। यहाँ पे हमारे जो होस्ट थे
वो बकायदा नाम लेके कहते थे एस से शुरू होने वाले ये 3 लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए हैं, अब यही 3 लोग उसका उत्तर देंगे। तो उन 3 लोगों से भी बुलवाया गया, उनके साथ में भी इंटरैक्टिव उसको बनाया गया। तो ये कुछ इस NWPT से हमें नई चीजें सीखने को मिली हैं। और फिर मैं अनिल जी आपसे एक 5 मिनट से 7 मिनट का ब्रेक की याचना कर रहा हूं। आप अपनी बातें करें, मैं फिर से yes sir. Then I was saying in this corona pandemic we start off thinking about doing online classes for the student, and then on 15th May I have remembered that I called to Professor Vijay Singh sir, and we are requested, sir, please deliver a talk in the 7-day international webinar that I am going to start in our college, even Christian College, Allahabad. Sir, very surprisingly say, yes, you can, but what would be the mechanism? I said the way there must be internet connectivity and online platform, that is Zoom, and then we connect the participants to online with the Zoom online platform, and we make host, co-host, and mute, unmute to the participants so that the lectures will run smoothly. So with all these discussion, sir was ready for this. And before that, sir has given a note, a paper in bulletin of IAPT about the mathematical modeling of corona. And that mathematical modeling I have read 2-3 times, and then I want to correlate. At that time, there was one WhatsApp video was running, that is a stick of candle. Stick of candle is burning, and it continuous burn at the end, and one of the candle is pull out from this sequence, then the burning process will stop at that place. So rest of the candlesticks will save. So what this is how to check the growth of the corona patient by using this lockdown mechanism. Lockdown is experimentally, as it was demonstrated in that particular video, and sir has given mathematical modeling of this lockdown corona pandemic disease and the number, and he gave the exponential expression. So we are very much curious about knowing all these things, how this mathematical model proposed, what kind of things are going on. Yes, it was on the base of the concept of radioactivity, that is dN upon dt proportional to n. The rate of change is proportional to number of the patient in contact. So there is a negative sign for radioactivity because the remaining part here directly proportional positive, because the number, if the number is there and there is a contact process, then that will increase. So these are two basic difference between the two concept in physics. So sir agreed, and sir give us very nice presentation, and with the word of encouragement of Professor Vijay Singh sir, then we start our webinar on 20th May to 26th May to 2020. And then there are all branches, say science, technology, and humanities. I have named that one is as survival strategy for post-COVID-19 era, perspectives from science, technology, and human social sciences. So we, in evening session, we try to arrange the lecture from social sciences, especially from psychology, especially from philosophy people, especially from social science people. So in the evening, that is 6 to 7, one
evening, the session was running up to 9 p.m. It was a wonderful interaction, neither participant nor speaker. Both are interacting and the discussion was going. So definitely this kind of the interaction is a wonderful interaction. And this was unfortunately propagate or spread in our society, or we can strengthen this due to the corona pandemic. But this time and previous days, there are so many kind of the webinars and people try to learn how to develop e-contents. That is, the people learn about the various kinds of the testing mechanisms, say Google Form, Google Quiz, and there are video editing softwares like Filmora, like Kahoot, like KineMaster, and so many techniques people used to think about and learn in this period to develop e-content matter. And not only this, sir, as sir said, it is chutkiyon mein kaam kiya. S.C. Verma sir rightly said chutkiyon mein kaam kiya. This chutkiyon mein kaam kiya is scientifically we have studied about the distributed system. There is one source and many linkages are there and working as a distributed network. And as he has pointed out, V.D. Das from West Bengal, that he shown his interference experiment for Utsahi teachers in West Bengal, and he arranged the camera to show what kind of the optical setup was there and how the complete setup with the study of interference fringes and all. Definitely this is only possible because of the online interaction. So resources are spreading and all resources are connected on the web platform, and the people share their knowledge, resources without, as Pathak sir said, there is no lunch and dinner as well. So without any expenditure like this, lunch and dinner and travel time and utilization of your time, if you are moving from one place to other place for 7 days FDP, then you will take at least 9 days, 1 day coming, 1 day going, and complete stay over there. But here you can save your time, especially on morning and evening and in between the sessions. So this practice that we have adopted and we have followed in various mechanisms, that the online sharing of knowledge, and now it seems that there is no class, face-to-face class before the December 2020, and various institutions, either it is the IITs or NITs or university or colleges, everywhere there is instruction that start the classes after the promoting the students for intermediates year or semesters from 1st August of this year, so that there is less harm, less loss of the students. So for that purpose, that you have to start online classes from 1st August, we have to learn all these kind of the mechanism. I have tried, I myself tried this Zoom. Apart from Zoom, GeoMeet, I have tried Cisco WebEx as first Cisco WebEx, and all was introduced by Professor Dr. R.K. Dwivedi Sahab when he organized a talk with this PSIT Institute, and I was also lucky to participate. So that was another time, and then Google Meet. So there are so many platforms, online platforms, and with less flexibility, means less facility. There are free version. There are free version up to 100 participants,
So it's this, in this present time, it's shown that there are 110 participants are attached to this Zoom platform. So if you have a lesser number, that is less than 100, so without any expense of this licensed version of the online platform, you can arrange your classes. And approximately in every week, I have arranged classes regarding the free this online platform on the Cisco WebEx and Geo, and we are always keep on searching what kind of problems are there in this free version, what kind of other problems are there on that free version. But if you want to conduct the class means our regular class, and strength is less than 100. If it is more than 100, then never a student attach up to the 100. So if the class strength is more than 100, say 120, then the free version is equally good. by giving self-discipline that you please mute yourself, because in free version there is no mute facility to the host. So participant must have to mute himself or herself, and then you can take the classes. You can take the recording as well of your class, how many students are there or what kind of the questions they have put. And one important example that I have started discussing in our college regarding the practical examination. In my institution and Allahabad University Center, most of the center, there is no practical examination has been completed. So there is a provision of practical examination on conference mode. Conference mode means students have to sit on one end and teachers and examiners are sitting at the other end, and they are asking the question and the student reply the answer, and the whole session is under the record. So what is the beauty of this? Because no student can say I get lesser mark than what he was expecting, because whatever he answered, that is recorded. And therefore, this conference mode of the practical examination is again very useful for this kind of activity. So, as these challenges on this online courses, online platform, definitely day to day, there is a acceptability of this platform as it run on the regular class basis, because I feel no institution can buy this much online license because it is very expensive. So each and every one must have tried the free version with certain self-disciplined way for a student as well as other stakeholders to do the interactive session. And since all facility, that is something like a screen share, video lecture, everything is there. So you can interact, we can interact to the students, and I hope in coming 4 months before the vaccine come up, this mode will be very useful. And those faculty who are already expert in the conducting these online courses are congratulated, and those who are not, they have to learn in this 7-day faculty development workshop. And we request, please do the workshop in a very sincere way, because this is the
because this is the ultimate way to interact with our students. And no other way is here, or in institutions, or in the big organizations. Work from home, as the phrase is very popular in these days, work from home. So work from home is train yourself with this technology. Many big institutions develop their own online platform. For example, day after yesterday, I was in MNIT campus in Allahabad, and the professor and head of the computer science department says Cisco WebEx contributed them to develop the online platforms to interact the students. But the workload factor is very, very large. If all the classes are running simultaneously, means all the disciplines, all the 7 odd semesters, so there is a problem. But if you have a good internet connectivity, and if you have this platform, then the classes will manage with the help of certain experimental knowledge and this technical knowledge. If we explore the Google all facility, that is Google Form, Google Class, you can have the comfortable working procedure with the doing all these things on the online platform. The one very good things is, as and when you have completed your quiz questions, you will get immediate the result from the Google Form. Google Form gives the immediate result. So the time of evaluation of the quiz is just after 5 minutes of the submission of the Google quiz. So this is a one good thing, that there is no time lag between the examination and the result in this way. So as he said, sir, it is not possible to interact 10,000 students at a time. And this much questions they have frame and discuss. And all these things are taking in a time lag frame. Time lag frame means you have enough time to frame the questions from the given materials, and enough time to respond them in the given time or the next lecture on the online mode. So this online mode, as the people has started long back, and the say king of the online store, that is YouTube. On YouTube, if we search, then more or less we will have the solution of each and every problem. Each and every problem. If you don't know how to activate this software, how to schedule the software, then you go and ask the YouTube how to do this, then definitely you will have 5 to 6 video lectures. And if you go to the video lectures, and then you can have this one things. At my MTech study in MNIT, in evening classes, I have used this method to study more and more on YouTube rather than joining the class. Because in the evening time, it was very difficult to take the class after whole day exercise in our parent institution. But the materials are available on the YouTube. And then I am talking, this was before 10 to 15 years ago. At that time, YouTube was not so much enriched, but
it was available. It was available, and people used to learn all these things from the YouTube. And many institutions like IIT Kharagpur, IIT Chennai, and other universities prepared very good lectures, YouTube lectures, series of lectures that is available. And long back, I used to download that lectures, especially from IIT Chennai, Madras, and used to say some of the lectures. One important thing, I have 6 to 7 video lectures from University of US University, that is Cornell University, and one professor, it is not Indian professor but Asian professor. Basically, he is from Bangladesh, and Asian professor. So to listen the Asian professors on American YouTube is very comfortable in comparison to American professors because of their phonetics. So at that time, that was very useful for us to have this kind. Now I request organizers, if there is a more delay in coming or joining Professor A.C. Burma sir, then we can start our next session with due permission of the organizers. Yes, sir. We are connecting H.C. Verma, sir. If we could make a call to him, so that will be good. So Professor R.K. Dwivedi is, I think, in connection with the Professor H.C. Verma. If it could not be done, so Professor Vijay Singh will be proceeding to the next session. So up to what extent we will wait? Just only 1 minute. 1 minute. Okay, fine. Hello. Hello. हाँ सर. Yes, yes. Sir. Yes, sir. Just coming. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes. Okay. हाँ sir, please. I'm sorry. मुझे बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, बहुत कुछ मेडिकल इमरजेंसी है परिवार में. आप सब लोग मुझे माफ करेंगे इसके लिए. Please start. ओके. तो हम ये बता रहे थे कि जो हमने अभी अपनी टीचर्स की वर्कशॉप की, उसमें से हमने क्या-क्या सीखा. एक तो कि हम अब किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं वर्कशॉप के अंदर में. पहले की जो हमारी लिमिटेशन थी कि भाई छोटे होने चाहिए, मेरे टेबल पे हट जाने चाहिए, वहीं के वहीं मुझे असेंबल करना है सबके सामने में, तो उसकी जगह पे अब हमारे पास बड़े भी सेटअप्स अगर हैं तो उनको भी हम डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं. कलेक्टिवली हम मॉनिटर कर सकते हैं. 20, 25, 40 लोगों का एक साथ हम 1 मिनट के अंदर में रिप्लाईज प्राप्त कर सकते हैं और उसका स्टैटिस्टिक्स जान सकते हैं. एक सवाल ऐसा था जिसमें सबने गलत आंसर दिए, 1 मिनट में पता चल गया कि सबने गलत आंसर दिए. तो ये एक नया फेज है. ऐसे इसमें फेस टू फेस में हम 2-4 लोगों से ही केवल इस तरह की बात कर सकते हैं और हम इसको बहुत इंटरैक्टिव बना सकते हैं और किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं. हमारे पास सबके डेटा है.
ये चीजें निकल करके आती हैं। नेस्ट जो है, नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, ये Sir, अभी हमारे can you share your screen, sir? It is not. अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं. Okay, it is not visible. Okay. I'll do that. Okay, share screen. Start podcast. हाँ. आया क्या स्क्रीन? अभी आ रहा है सर. स्क्रीन शेयर हुआ क्या? Yes, under process. Okay. It is under process. Yes. Okay. नहीं आ रहा है. Under process, it is sharing, sir. हुआ क्या सर? हो रहा है सर, हो रहा है. Just हुआ क्या? Yes, it is under process. Yes, sir. हो गया It's सर. perfectly all right. हो गया Now सर. it's visible. Okay. So now I come to this National Anveshika Experimental Skill Test. ये अभी हमारी इस समय की चुनौती है. ये प्रोसेस अभी चल रहा है और हम इसके नए नए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और नए नए ढंग से इसको हम लेके चल रहे हैं. ये मेरे पास स्क्रीन पर डेटा यहाँ आप देख रहे होंगे. ये नेस्ट 2020 अब anani.hcverma.in इस वेबसाइट पर कंडक्ट किया जा रहा है. ये एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट के रजिस्ट्रेशंस पहले हमारे सभी 26 अन्वेषिका के जो कोऑर्डिनेटर्स होते थे बहुत भागदौड़ करते थे. अपने अपने एरिया के स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रिंसिपल से मिल करके, उनसे बात करके, हर एक इंस्टीट्यूशन से 10-10 की हम एंट्री नॉमिनेशन लेते थे और ऐसे करके इकट्ठा करके एक जगह पे उनको बिठा करके बड़े हॉल के अंदर में प्रोजेक्टर वगैरह लगा करके, और फर्स्ट राउंड हमारा होता था जो स्क्रीनिंग राउंड होता था, जिसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स 1 मिनट का या 20 सेकेंड का या 40 सेकेंड का ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट या नेचुरल फेनोमेना उसका रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाते हैं. उसके बाद उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम पूछते हैं और उस पर टेस्ट होता है, वहाँ से स्क्रीनिंग होती है. तो ये जो हम क्या करते थे, बड़े बड़े हॉल बुक करते थे, किस स्कूल के अंदर में क्या कहाँ प्रोजेक्टर मिल जाएगा उससे बात करना, ये सारी गतिविधियां जो हमारी ग्राउंड पर होती थी, मैदान में होती थी, कार्यक्रम हमारा इस तरह का था. अब वो सारा काम हम इस nani.hcverma.in वेबसाइट पे कर रहे हैं. ये IIT कानपुर की डेवलप की हुई वेबसाइट है. उनका जो सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, जिस पे मैं अपने BSc के कोर्सेज देता हूँ, उसी मुख्य प्लेटफॉर्म पर ये हो रहा है. वेरी काइंडली उन लोगों ने ये कोऑपरेट किया कि हमारे IAPT के इस प्रोग्राम को अपने वेबसाइट के ऊपर उन्होंने होस्ट किया और उनकी पूरी जो टेक्निकल टीम है वो मेरे साथ लगी हुई है इसको करने के लिए. 2019 में जो हमने नेस्ट किया था उसमें हमें टोटल 25,726 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था स्क्रीनिंग राउंड के लिए. और अभी ये 21 तारीख का डेटा आपके स्क्रीन पे है 10 बजे का. 30,995 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है इस साल के नेस्ट के लिए nani.hcverma.in पे. अभी तक ये टेस्ट 9 अगस्त को है और उसके पहले तक रजिस्ट्रेशंस चलते रहेंगे. और अभी की समय में जो आज की तारीख के अंदर में 12 बजे का डेटा है वो थोड़ा और ज्यादा है. अब तक 31,933 स्टूडेंट्सों ने रजिस्टर किया है. तो हम सारे फॉर्मेट बदल रहे हैं और सारे पैटर्न्स जो है वो बदल रहे हैं. अभी जो मैं बात कर रहा था फोरम और डिस्कशन की,
तो ये फोरम डिस्कशन इन बच्चों के लिए भी खुला हुआ है जो इस nani.hcverma.in पर रजिस्टर कर रहे हैं। हमारे फेस टू फेस में हमारे अन्वेषिका कोऑर्डिनेटर्स घूमते फिरते रहते थे, दौड़ते रहते थे, ये इंतजाम करना है, वो करना है, यहाँ पे बच्चे कहाँ बैठेंगे, टेस्ट में एक से दूसरे के बीच की दूरी कैसे होगी, मेंटेन कैसे करेंगे, परीक्षा कैसे करेंगे, और फिर किस स्कूल से कितने आ रहे हैं, उन सबका डेटाबेस बनाना, उन सबको मॉनिटर करना, उनके नाम ढंग से करना, एग्जामिनेशन के हिसाब से अरेंज करना, इसी सब के अंदर में फील्ड एक्टिविटीज में होता था। और बच्चों से साक्षात्कार एक बार सिर्फ होता था ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। उनका वो टेस्ट लिया जाता था, जो भी 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का टेस्ट है, उसके बाद वो अपने घर जाते थे और हमारे कोऑर्डिनेटर्स उसके बाद उनकी कॉपी जांचने में, इवैल्यूएशन में लग जाते थे। दैट्स इट। अब इस बार का फॉर्मेट सुनिए। ये 1 जुलाई को खुला था इसका रजिस्ट्रेशन, और 9 अगस्त को ये टेस्ट है, तो लगभग 40 दिन के पहले हमने ये रजिस्ट्रेशन खोला। जिसने 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन किया वो 40 दिनों तक इस वेबसाइट का पूरा फायदा उठा सकता है और उठा रहा है। जो आज रजिस्ट्रेशन करेगा 22 तारीख को, वो भी 8 दिन और 8 दिन 16 दिन का समय है, जबकि वो यहाँ पर पूरा फायदा उठा सकता है। ये जो 32,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, वो ऑलरेडी इसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, अपने फिजिक्स के डाउट्स क्लियर करा रहे हैं, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या हम लोगों की टीम है, अन्वेषिका कोऑर्डिनेटर्स की टीम है, हम लोग उसको उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब तक कुछ 3,703 सवाल पूछे जा चुके हैं, 10,143 उनके उत्तर दिए जा चुके हैं। तो ये फिजिक्स लर्निंग जो है, इस नेस्ट के थ्रू अब फिजिक्स लर्निंग भी साथ साथ चल रही है। और हम लोग समय समय पर 1-2 दिन के बाद वहां पर एक वीडियो लेसन अलग से डाल देते हैं, कोई अलग सा वीडियो लेसन डाल देते हैं, कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है उसको डाल देते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को वो लोग अपने घर में रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो कई सारे विद्यार्थी उसको अपने घर पे क्रिएट करके उस एक्सपेरिमेंट को वहां से, और बहुत हाथों से काम करने की कला वो वहां से सीख रहे हैं। तो जो हम अपने लिस्ट में पिछले साल तक नहीं, जिन विधाओं को, जिन एस्पेक्ट्स को हम छू भी नहीं सकते थे, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो इस साल हम कर रहे हैं। तो ये जो पोस्ट कोविड सारा सिनेरियो बदलने वाला है, उसके अंदर में कई सारे चीजें हैं जो हमारे पास में, नए टूल्स आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ट्रांसमिशन की, कम्युनिकेशन की, और कैसे हम फिजिक्स को कम्युनिकेट करें सोसाइटी के साथ में, लार्ज नंबर्स के साथ में इफेक्टिवली करें, उनको इन्वॉल्व करें पूरे डिस्कशंस के अंदर में। ऐसे सिलेबस को हम पढ़ाते हैं तो वो केवल परीक्षा के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम उनको बहुत अलग ढंग से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी चल रहा है, लेकिन इसका जो असली चैलेंज आने वाला है वो इस स्क्रीनिंग राउंड के बाद आने वाला है। 9 अगस्त को स्क्रीनिंग हो जाएगी, जो उसके क्वेश्चंस हैं, एक नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, नेटवर्क ड्रॉप हो जाते हैं कई दफा। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम 4 अलग अलग सेट बनाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर के। 10 वीडियोस का एक सेट होता है, हम तो अभी तक एक ही सेट बनाते थे, तो हम 4 सेट बनाएंगे और उनको 9 अगस्त के 4 डिफरेंट टाइम्स पे, एक सुबह में, तो एक दोपहर में, एक शाम को, एक लेट नाइट, ऐसे उसको हम वहाँ पे लोड करेंगे, ताकि किसी ने अगर फर्स्ट स्लॉट के अंदर में उसका नेटवर्क काम नहीं किया और उस 1.5 घंटे के अंदर में वो सबमिट नहीं कर पाया, तो उसके पास ऑप्शन रहे कि वो सेकंड स्लॉट में कर ले, या थर्ड स्लॉट में कर ले, या फोर्थ स्लॉट में कर ले। तो ये सब बहुत तरह के प्रॉब्लम्स जो आ सकते हैं, उसको भी हम लोग सोच करके और उसके अनुसार कर रहे हैं। तो अभी उसके हम लोग सब लोग वीडियो बनाने में पड़े हैं, सारे अन्वेषिका कोऑर्डिनेटर्स क्वेश्चन पेपर बनाने में पड़े हैं, क्योंकि पहले तो 10 ही वीडियोस बनाने होते थे, अब 40 बनाने। तो सारे अन्वेषिका कोऑर्डिनेटर्स अब उस चीज के ऊपर लगे हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने पर लगे हैं। तो बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें भी बहुत अलग किस्म के हो रहे हैं, लेकिन असली चैलेंज इसके बाद आने वाला है। असली चैलेंज इसके बाद आने वाला है, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद जो सिलेक्ट होंगे अगले चरण के लिए, वो हमारे रेगुलर नेस्ट में हम उनको 20 लोगों को का एक सेंटर बनाते थे, चयनित लोगों का, और सेंट्रली कानपुर में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते थे, 3 एक्सपेरिमेंट्स, और सभी अन्वेषिकाएं अपने अपने इम्तिहान के सेंटर्स पे उन 3 एक्सपेरिमेंट्स के सेटअप रखती थी, मल्टीपल कॉपीज,
और ये जो 20-22 लोग सेलेक्ट होते थे उस सेंटर के लिए, वो लोग उसको एक्चुअल टेबल पर परफॉर्म करते थे और हमारे रिसोर्स पर्सन्स बहुत माइन्यूटली एक एक चीज को देखकर उनके एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करते थे और उसके बाद फिर वो आगे के राउंड में भेजे जाते थे। इसको हम लोग प्रीलिम्स राउंड कहते हैं। अब हमारी चुनौती है कि ये हम प्रीलिम्स राउंड कैसे करने वाले हैं, तो बहुत विचार मंथन चल रहा है क्योंकि ये भी हमें ऑनलाइन ही करना है और ये हम कैसे ऑनलाइन करेंगे क्योंकि हम अपनी किसी भी स्पिरिट को डायल्यूट नहीं होने देंगे। स्क्रीनिंग हमारी जिस स्पिरिट में पिछले साल हुई थी उसी स्पिरिट में अभी हो रही है, सेम फॉर्मेट है, वैसे ही वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वैसे ही एमसीक्यू है, केवल पैटर्न्स बदले हैं, मैनेजमेंट है, लेकिन क्वेश्चन पेपर वैसे ही बनता है। ये जो एक्चुअल हाथों से परफॉर्म करना एक्सपेरिमेंट को और उसके स्किल्स को टेस्ट करना, ये जो हमारी फिलॉसफी है नेस्ट की, हम इसको भी डाइल्यूट नहीं होने देंगे। हम इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं सब लोग मिल करके, जो स्टूडेंट्स अपने घर पे कर सकें और जो घर में अवेलेबल सामान है उसी से कर सकें। हम मान करके चलते हैं कि सबके पास मोबाइल फोन है, अगर वो कोर्स कर रहे हैं, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जरूर उनके पास मोबाइल फोन है और जरूर उसमें स्टॉप वॉच होगा, तो टाइम मेजरिंग डिवाइस है उनके पास में। इसी तरह से अगर वो स्टूडेंट है तो जरूर उनके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा और प्लास्टिक का चेंज का स्केल जरूर होगा। और घर अगर है तो गिलास होगी, कटोरी होगी, भगोना होगा, चिमटा होगा, झाड़ू होगी, ये चीजें होंगी। इन्हीं में से हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें सभी इंग्रेडिएंट शामिल होंगे। मेजरमेंट करना, चीजों को असेंबल करना, एरर कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, लीस्ट काउंट कितना है उसको देखना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा में से कुछ कैलकुलेशंस करके और कुछ फिजिकल पैरामीटर्स की गणना करना, ग्राफ प्लॉटिंग है तो ग्राफ प्लॉटिंग करना, वहां से चीजें निकालना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे डिजाइन कर लिए हैं और जो हमारे अन्वेषिका के लोग हैं, टीम है, वो अपने अपने घरों में उन एक्सपेरिमेंट्स को करके उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, हमारे स्टूडेंट्स उसको कर लेंगे। और फिर वो जो डेटा होगा, वो जो उनके कागज होंगे, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स के फोटो, स्टिल फोटो होंगे, वो हम उनसे स्कैन करके मंगाएंगे और हर अन्वेषिका के केंद्र पर उनको उसी प्रकार से रिसोर्स पर्सन्स आकर के इवैल्यूएट करेंगे। वाइवा वगैरह हम पहले भी नहीं लेते रहे हैं, हम केवल वॉच करते रहे, लोगों से बातें करते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 5 प्रश्न पूछेंगे और 5 नंबर उसके होंगे, वो हम पहले भी नहीं करते रहे हैं, वो हम अभी भी नहीं करेंगे। हम अपनी सारे स्पिरिट्स को मेंटेन रखते हुए ऑनलाइन प्रीलिम्स भी कराने के, वो हमारी अभी इस समय में चल रही है, सितंबर के अंदर में वो होना है। और इस बड़ी चुनौती को हम लोग किस तरह से लेंगे, ये सितंबर के बाद कोई वेबिनार होगा तो हम उसमें उस चीज को प्रेजेंट करेंगे। सर अपने को म्यूट कर लीजिए, जिनका भी टेलीफोन आ रहा है प्लीज हम नहीं देखे, प्लीज म्यूट कर लीजिए विजय सिंह जी। हाँ प्लीज आगे बढ़े हम। यस सर। तो ये चीजें हो गई और कोर्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं, एनएससी में हाँ ठीक, हाँ इनको फोन कर लेने देते। राइट राइट राइट। Ashish, can you unmute him? Yes, please go ahead for muting. Okay. Mute all participants except वो 1 घंटा ही होगा एनएससी, 1.5 घंटे क्यों नहीं कर रहा? ओके डन। नहीं अभी Aparna ma'am, please instruct your. Yes sir, sure sir, I'm doing that. To mute all except Burma sir. Yes sir, now he is muted.
Verma sir, please you unmute, sir. Verma sir, please unmute yourself. Now the host is asking to unmute yourself. Yes, sir. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now please. it's done. Okay. Yes. Okay. Please Okay. continue, sir. Yes. Okay. Very good. Very good. So what I was telling is that हमने अभी तक इसके strengths की बात की कि अगर हम ऑनलाइन सिस्टम पे जाते हैं तो कौन से नए टूल्स मेरे टूल बॉक्स में आ गए हैं और उनका किस तरीके से हम लाभ उठा करके अपने डिलीवरी को बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, जो हम अभी तक नहीं कर पाते थे, उसके लिए जानते भी नहीं थे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम आने के बाद, इसमें काम करने के बाद ये समझ आ रहा है कि अच्छा ये हमारे पास में नए टूल्स आए। अब उसकी जो चैलेंजेस हैं या लिमिटेशंस हैं उसकी भी मैं थोड़ी बात कर लूं। एक बहुत जबरदस्त लिमिटेशन है जिसको हम कह रहे हैं कि ये केवल सब्जेक्ट टीचिंग ही करा सकता है, ये केवल सब्जेक्ट टीचिंग ही करा सकता है, लाइफ स्किल्स इसमें से नहीं सिखाए जा सकते हैं। या ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं सिखाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत मुझे नजर नहीं आ रहा है कि लाइफ स्किल हम कैसे सिखाएं। जब हम फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपने स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो 40 मिनट में हम जो पढ़ाते हैं, हम सिर्फ उतना ही नहीं सिखाते हैं उनको हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उनको हम डिसिप्लिन सिखाते हैं, उनको हम टाइम पे आना सिखाते हैं, टाइम पे जाना सिखाते हैं, उनको हम ठीक से बैठना सिखाते हैं, ठीक से उठना सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। हम टीम वर्क करते हैं, जब उनको लैब में ले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के जो जब घंटियां बजती हैं एक्सपेरिमेंट वाली, तो लैब में साधारणतः 2 या 3 विद्यार्थी एक साथ काम करते हैं, तो साथ मिलकर के कैसे काम करना वो सिखाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लाइफ स्किल्स उसको सिखाते हैं, कॉम्पिटिशन्स कैसे करना और कितना करना, और एक दूसरे की सहायता कितना करना, मिलकर के कैसा काम करना, ये बहुत सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं। सादगी के साथ रहना, एक टीचर कैसे रहता है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे लोगों से बात करता है, किस तरीके से लोगों के साथ में अपने भावनात्मक संबंध जोड़ता है, वो स्टूडेंट्स उसको इम्बाइब करते हैं, वो चीजें हम सिखाते हैं। लेकिन इस मोड में अगर हम शिफ्ट कर जाते हैं तो इस नए मोड के अंदर में हम केवल सब्जेक्ट सिखा सकते हैं। लाइफ स्किल सिखाने के लिए उसकी हमें बहुत अलग ढंग से सोचना पड़ेगा कि वो हमें कैसे करना है। तो ये एक बड़ा लिमिटेशन मुझे समझ में आता है कि हमें बैलेंस कैसे हम ये बनाएंगे जिसमें कि हम इस ऑनलाइन मोड के अंदर में जाएंगे। दूसरा एक बड़ी चुनौती जो हमें नजर आती है वो ये आती है कि स्टूडेंट्स को इंगेज रखना इस ऑनलाइन मोड के अंदर में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अभी सारे बहुत सारे जितने स्कूल्स हैं उन सब में ऑनलाइन क्लास, व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेस चल रहे हैं, इसके ऊपर क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको देखते नहीं हैं, खासकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी, अगर हम विद्यार्थियों को देखते नहीं हैं तो उन पर इतना सा जो एक सामान्य सा बंधन है कि भले ही उनका दिमाग कहीं और रहे, क्लासरूम में रहे ना रहे, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा ब्लैक बोर्ड पर या शिक्षक पर रहती है। वो सोच रहे होंगे कुछ और, आपको सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन कम से कम वो सामने देखते होते हैं, वो पीछे नहीं देखते होते हैं। लेकिन इस मोड के अंदर में जब हम जाते हैं, जबकि हम स्टूडेंट्स को देखते नहीं हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने स्टॉप वीडियोस कर लें। बहुत बार हम ही कहते हैं कि भाई नेटवर्क के ऊपर लोड है, सब लोग अपने अपने वीडियो स्टॉप कर लो ताकि कुछ नेटवर्क का स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो उस समय में वो कौन किधर घूम रहा है, किधर सोच रहा है, कौन उठ के चला गया, जैसे मैं बीच बीच में उठ के चला जाता हूँ, लेकिन वहां पर बिना बताए हुए उठ करके चले गए। अगर 25 लोगों का क्लास है, 40 लोगों का क्लास है, तो कौन एक्चुअली वहां पर है और केवल किसकी फोटो वहां पर लगी हुई है, ये करना बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट्स को इंगेज रखना लाइव क्लासेस में खास करके, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो स्टूडेंट को अपने मन से अपने टाइम पर देखना है, तब तो ठीक है, तब तो वो अपनी इच्छा से बैठा है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम उसको बिठा रहे हैं कि 10 बजे से 10:50 तक तुम्हारा क्लास है, बैठो, तो उस समय में ये एक बड़ी चीज हो सकती है।
और इसलिए कई बार लार्ज ड्रॉप आउट्स की संभावना इसमें दिखती है कि अगर ये उस तरीके की क्लास नहीं है जिसमें कि बाकायदा उसको उसी के अटेंडेंस के आधार पर करना है, बोर्ड करना है, तो फिर उसमें से लोग कोर्स छोड़ देते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में भी अनुभव ये रहा है कि जितने लोग रजिस्टर करते हैं कोर्सेज में, एक इंटरनेशनल एक डेटा हमें बताया था हमारे प्रोफेसर प्रभाकर जी ने कि 5-6-7% लोग ही उसमें बचते हैं, बाकी सब ड्रॉप आउट कर जाते हैं। हम मेरे कोर्स के अंदर में ये नंबर थोड़ा ज्यादा है, डबल डिजिट के अंदर में है, लेकिन ये ड्रॉप आउट का मामला रहता है। तो ये एक नई चुनौती है कि स्टूडेंट्स को हम कैसे इंगेज करके रख सकते हैं। फिर सबसे बड़ा जो मुझे एक ऑब्स्टिकल लगता है इस मोड में कि इसमें टीचर्स के टाइम के ऊपर डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रिपरेशन डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं जब आईआईटी कानपुर के अंदर में लेक्चर करता था, जब मैं 2017 के पहले पढ़ाते हैं, विजय सिंह जी भी वहाँ पर कर चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हमारे रूटीन के अंदर में सप्ताह में हमें 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स देने होते थे 1-1 घंटे के, 55 मिनट के। सप्ताह में 3 लेक्चर्स। यूनिवर्सिटी में सप्ताह में 22 लेक्चर और 23 लेक्चर्स, 21 लेक्चर्स होते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल्स मिला दें तो। लेकिन यहाँ पे अगर अनेक बार हमें सिर्फ एक कोर्स पढ़ाना है, उस कोर्स में मात्र 3 लेक्चर देने हैं, फिनिश। या कभी एक ट्यूटोरियल लेना है, एक लैब करनी है, फिनिश। लेकिन जिस समय वो 4 महीने का टीचिंग सेमेस्टर चलता रहता है, उस समय में आईआईटी के प्रोफेसर जो कोर्सेज देते हैं, उनका सारा रिसर्च धीमा हो जाता है। वो कहीं यहाँ वहाँ इधर उधर वो टॉक देना और ये करना वो करना, वो चीजें बहुत कम हो जाती हैं। सारा समय उनका चला जाता है वो 3 घंटे के अलावा जो बाकी 7 दिन का समय है, जो 3 घंटे का एक्चुअल लेक्चरिंग करना है, वो सारा का सारा चला जाता है उन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के अंदर। तो 1 घंटे के लेक्चर के लिए और 5 घंटे 6 घंटे का प्रिपरेशन टाइम ये बहुत एवरेज है। मेरे को तो उससे बहुत ज्यादा लगा करता था। लेकिन जब मैं 2016 के बाद से ये ऑनलाइन वाले कोर्सेज दे रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जितना मैं आईआईटी कानपुर में एक लेक्चर के लिए समय दिया करता था, उसका कम से कम 5-6 गुना ज्यादा समय मुझे यहाँ देना पड़ रहा है अपने ये ऑनलाइन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए। और फिर उनके क्वेश्चन आंसर जो बच्चों के हैं उसको बैठ के देखना, हजारों क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके आंसर्स देना, और दूसरे स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे हैं उनको भी देखना, उसमें जो गलत आंसर आ रहे हैं उनको भी ठीक कराना। तो वो इंटरेक्शंस करना और प्रिपरेशन भी करना, वीडियोस बनाना, रिकॉर्ड करना, उसको ठीक से दोबारा देखना, जो गलतियां उनको एडिट करना, उसके एडिटर के साथ में बैठ करके, ये सब मिला करके टाइम पर जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अगर आप इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, जो मैनेजमेंट कमेटी होगी, जो बोर्ड्स होंगे अपने यूनिवर्सिटी के और स्कूल के, कॉलेजेस के, वो इस बात को अगर रियलाइज नहीं करेंगे तो वो पहले के ही जैसे अगर आपको लेक्चर पकड़ा दिया, उन्होंने टाइम टेबल बना दिया कि इतना कोर्स इतने लेक्चर में खत्म हम करते आए हैं, इतना कोर्स इतने लेक्चर में खत्म करना है, तो फिर वो इफेक्टिव टीचिंग जो है ऑनलाइन माध्यम से करना, उसके जो स्ट्रेंथ्स हैं उसका इस्तेमाल करना, ये शायद कठिन हो जाएगा। और फिर हम वही जो अभी जस्ट जो किताबों में लिखा है वो किसी तरह वहां तक पहुंचा दें, उसी मोड में हम वापस चले आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस ऑनलाइन सिस्टम का। ये इस जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जो आगे प्लानिंग करेंगे, उनके लिए ये एक चुनौती भरा काम होगा कि इसको देखना, तो सिलेबस को कैसे रीट्यून करना है, टाइम टेबल को कैसे। एक्सक्यूज मी सर वर्मा सर, what we want to request you, the remaining part we will organize another lecture. सर ठीक है सर, मैं आप another कितने 2 मिनट देंगे, 3 मिनट देंगे? Yes sir. Okay, very good, wonderful. तो और इसके बाद जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो एग्जाम्स की, क्योंकि अब हम इन्विजिलेशन नहीं करेंगे। अब मुझे इन्विजिलेशन नहीं करना है, ये ओपन बुक एग्जाम है और ओपन डिस्कशन एग्जाम भी हो सकता है। और इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाने हैं वो बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होगी। ओपन बुक एग्जामिनेशन बहुत कम लोग दिया करते हैं, लेकिन अब सारे लोगों को देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को देना पड़ेगा।
तो वो एक क्वेश्चन पेपर बनाना ये एक दूसरा बड़ा काम होगा जिसे हमें सीखना पड़ेगा इस ऑनलाइन के सिस्टम में अगर हम जाते हैं। जो हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम लोग ने 50 साल से ये ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा करके और इसके अंदर जो सीखा है कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, और तब भी हमें टीचर्स ट्रेनिंग की जरूरत है। तब भी पूरे वो मदन मोहन मालवीय मिशन फॉर टीचर्स टीचिंग एंड टीचर्स वो चल रही है केंद्र सरकार की ओर। लेकिन अब जब हम इस नए फॉर्मेट में जा रहे हैं, एकदम पहली बार सीधा कूद ही जाना है, तो ये टीचर्स ट्रेनिंग का फॉर्मेट भी एक बहुत अलग किस्म का होगा और इसके ट्रेनर्स कहाँ से मिलेंगे ये सोचने की बात है, क्योंकि किसी के भी पास इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इंडियन एनवायरनमेंट के अनुसार, हमारे सेटअप के अनुसार। ये सब इसके चैलेंजेस हैं, बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम हमेशा जुझारू लोग हैं, हम संघर्षशील लोग हैं, हम हर परिस्थिति के अंदर में और बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो करने की हमारे अंदर क्षमता भी होती है, स्पिरिट्स भी होते हैं, साहस भी होती है, हम कदम रख सकते हैं। हम कभी नहीं कहते कि ये कठिनाई हो गई तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो बेस्ट विशेस टू द एंटायर फिजिक्स कम्युनिटी। इस नए सिस्टम के अंदर में भी हम अपने झंडे गाड़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने फिजिक्स एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. And within this 7 days, sir, we would like to have another lecture from your side in some point of time as per your convenience, sir, because it is very useful, especially in this pandemic time. So thank you very much, sir. Now, in the session, our next speaker is Professor Vijay Singh, sir. As it is very clear कि if there is a fauj, as Professor H.C. Verma sir said कि शिक्षकों का फौज तैयार करना है, उत्साही शिक्षकों का फौज तैयार कर रहे हैं, तो फौज जब तैयार हो जाता है तो उसका एक कमांडर भी चाहिए। यस सर, एक कमांडर भी चाहिए उस पूरे फौज के साथ जंग जीतने के लिए। तो इस समय मैं मेरे दूसरे सेशन में जो स्पीकर है वो हमारे फौज के कमांडर हैं। ही इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, प्रोफेसर विजय ए सर। प्रोफेसर विजय ए सर is now commander of the Utsahi Teachers, president of Indian Association of Physics Teachers, sir. सर आपके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, और सर जैसे है थोड़ा सा जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो फिजिक्स के बाहर के भी हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर विजय एस सिंह completed his doctoral degree from the State University of New York in 1978. He was professor of physics at Kanpur for over 20 years, that is from 1984 to 2004, and professor of physics at the Homi Bhabha Center for Science Education, which is the center of the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, from 2005 to 2015, as well as adjunct professor, Center for Excellence in Basic Sciences, CEBS, Mumbai, and Mumbai University and IIT Bombay. He is fellow of National Academy of Sciences, visiting professor CEBS, as well as the president of Indian Association of Physics Teacher. He was the national coordinator. He was the national coordinator of Science Olympiad. And with these words, I request Dr. Vijay S. Singh, sir, please give your blessings to the participants in this 7-day faculty development program. Please, sir. Thank you very much. Am I clearly audible? Yes, sir. Very clear. Okay, thank you very much. I would first like to thank
the organizers for inviting me to give to deliver this lecture. So honorable and very respected Vinay Pathak ji, Shri Dr. Joseph Daniel ji, Dr. Satyaprakash Singh ji, Dr. Sanjeev Balla ji, Dr. R.P. Sharma ji, and Dr. H.C. Verma ji. I'm very privileged to be in your company, and I would also like to thank Aparna Dixit ji, Anil Kumar Singh, and Rajesh Dwivedi ji for asking me to give this talk. So I don't think I will give my blessings, of course, and all my good wishes to you. But I do have a small presentation to make for about 45 minutes. So can I make that presentation? So yes, sir. Please start. Yes, sir. I'll have to share the screen. Yes. Without much delay, let me share the screen. Yes, and sir. Let me tell you what I will speak about. Okay, I will speak today on a mathematical number called the golden ratio. It is close to 1.6. I will talk about a physics topic, the center of mass, and then I will talk about some history and art appreciation, all of them together. In fact, I will try to put it together in one single framework. And मजे की बात तो ये है, the interesting thing is it can be all understood by a 9th standard student. A good 9th standard student can understand what I will say. And what is also interesting is someone who has done his PhD and is a research scientist may also learn a few things perhaps from this talk. Okay. So once again, thank you, Dr. Verma, for giving such a nice talk. And let me begin. This is my email ID, physics.sutra@gmail.com. Okay. So first we begin with the mathematical number golden ratio. Okay. Just give me a minute. Is this clear? Yes, sir. Can you see the... Yeah. Everything is very clear, okay, sir. It's perfectly all right, sir. Ma'am, Aparna ji, if sometimes I'm not clear, you tell me to go slow or to do something. Sure. Okay. Sure, sir. Okay. No. Thank you very much for giving me a feedback if it is not going all right. Okay. Yes. So this number is basically 1.618. You can see it right here. If you can see my cursor, and it has an Indian origin. Okay. There was an Indian Sanskrit scholar and mathematician, Virahunk. 1400 years ago, he talked about a certain sequence. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, etc. And then it says the sequence is interesting because it's the sum of previous two numbers. So it's like a Markov sequence, as it is called. So, and then you take the ratio of 2 to 1 is 2, 3 to 2 is 1.5, 5 to 3 is 1.67, 21 to 13. My cursor is clear, ma'am? Yes, sir. Okay, it's 1.62. So as you go to a large number, you will get this irrational number. It's an algebraic irrational number, 1.618 ... This is the Virahunk sequence. Okay. And if you would like to know how he got it, from Sanskrit syllable structure, Sanskrit की मात्रा से लेकर उन्होंने ये sequence generate किया था. तो संस्कृत की मात्रा जो है और syllabic structure of Sanskrit was enunciated 1000 years before the 6th century AD. That is by Pingala in about 300 BC before Christ. So ये करीब 3000 साल पुरानी नंबर है. उनसे उन्होंने ये प्रेरणा लेके, inspiration लेके ये number generate किया था. And if you would like to understand how he got it, there is an article in the bulletin of the IAPT in March this year, which I have written with a student Nivedita, which explains this. Okay. तो अब भूल जाइए कि कैसे उनको मिला, how he got it from Sanskrit matras, but this is the number. Now एक मजेदार बात है कि I have to tell you some history. Just as Indian silk, Indian spices, Indian gold, all of this traveled from India to Europe. Okay, our Indian mathematics also traveled. Okay, so here is the picture. The Indian mathematics traveled with Indian spices along the spice silk route. And it went like this. It went via Persia. It went south of the Caspian Sea. It went via Bactria through Istanbul. Now, that time it was called Constantinople. It went into Italy first. That is why the Italians had our spices and our knowledge. The first universities in Europe are in Italy, and they got the knowledge from China, India, and the East.
there was one mathematician in Italy who was very fond of this sequence, Virahanka sequence, and his name was Fibonacci. Okay. तो अब mathematics की बात कर रहे हैं, तो Fibonacci ने कहा कि there is another way I can generate the sequence. He says this is a very interesting sequence by Virahanka, by these Indians, and look at this rule that I am making. This is a rule of rabbits, he called it. Mother rabbit gives birth to one daughter rabbit every year. Rule number 1. Daughter rabbit grows up to become mother rabbit in 1 year. Rule number 2. And rabbits are immortal. इतना आप ले लीजिए, इतना मान के चलिए mathematical rules, and then you see what you will get. Okay. 0th year, there is a mother rabbit. Okay. Next first year, sorry, can you see it? Oh, Yes, sir. Yes, sir. I think so. Yes, sir, we can see. I went to annotate and I missed myself somehow. Okay. Okay. Sure. Anyway, first year, mother rabbit gives birth to a daughter rabbit. Next year, this same mother rabbit gives birth to another daughter rabbit, but the daughter rabbit becomes a mother rabbit. So 3 हो गए. 3 से ये 5 हो गए. कैसे? Mother rabbit gives birth to a daughter rabbit. ये daughter rabbit जो है वो mother rabbit बन गई. And this mother rabbit gives birth to another daughter rabbit. 5 से 8 बन गए. So you get the same sequence as what Virahanka did. So now it is known as the Fibonacci sequence in the West, and this number golden ratio is attributed to Fibonacci. Thanks to Indian mathematicians' work in recent times, people have now recognized that this number, golden ratio, which is so important in the fashion industry and in Western aesthetics, has an Indian origin. Okay. And you can read about it, as I said, in this particular article that Nivedita and I have written in the bulletin of IIPT. All well scholarly researched articles. Okay. Okay. So now we continue with this. Okay. Mathematics only. This number is the solution of the following differential quadratic equation. If you take x square minus x minus 1 equal to 0, okay, and you solve it, you get 1 plus root 5 by 2, which is this Fibonacci number. Okay. So very interesting that way. Or agar minus le le, so you'll get 0.618. And if you multiply this 2, you'll get 1. Okay. So there is that Fibonacci something. But now enters Ramanujam, the great Ramanujam, the Indian mathematician. He said, I can write this number as an infinite continued fraction. He said, you look at this number and you have 1 plus 1 divided by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1, etc. Take this sequence. Now you can see that the sequence from this point onwards, okay, let me see if I can get the annotate. If I can get annotate, then I can do this quite nicely for you. Annotate aa raha hai, Okay, let us hope I've got it. Wait, something has come in between. So here it is. If you look at this particular thing, okay. Oh my God, I got something else. Why is this coming? Right, this is also x. This entire sequence is also x. So I have 1 plus 1 by 1 plus x. And if you open this out, you'll get this quadratic equation. So that is how we got it. So Ramanujam, basically, उनके बारे में कहानी है कि every number was a friend of Ramanujam. Ramanujam was a friend of every number, Srinivas Ramanujam. So I hope that by the end of this 45-minute presentation of mine, you'll become friends with one number, and that is the golden ratio. Okay. So mathematics is over. Let me go to some art. I talked about a little bit of history. Now a little bit about art, okay, and appreciation. In the West, the golden ratio is a very important number. Okay. If you look at the Greek structure called the Parthenium, which is right here, okay, this Parthenium is basically got a structure which is, how should I say, it's like the golden ratio. If you look at this width and you divide it by this height, and you take the ratio, it is 1.61. If you look at this very famous painting by Leonardo da Vinci, if you look at the distance from the head to the chin of this lady, Mona Lisa, and from the ear to the ear, that distance, and you take the ratio, you get the golden ratio. Then people say, if you look even at the Taj Mahal, okay,
and you look at the main gate of the Taj Mahal, then its height to its width ratio is also the golden ratio. Now, very interestingly, I came across the golden ratio, or a very close approximation to it, in a village, in a mud house in Bihar. Okay, in that mud house of Bihar, वो कच्चे का मकान था, जो कच्चा का बना हुआ रहता है. तो मैंने ये पेंटिंग देखी. I saw this painting. Okay. When I saw this painting, I was very intrigued. I measured it. I measured the radius of the larger white circle and divided it by the radius of the smaller black circle. And lo and behold, I got 1.61. Also a golden ratio. Okay. I don't know why they made this golden ratio. I asked the lady who made it. She said कि वो भोजपुरी में उन्होंने कहा कि नीमन लगाता, नीमन दिखता है, ये रेशियो अच्छा दिखता है. That is what she said. She liked this ratio. She liked this kind of ratio of painting. And by the way, this painting was done on a wall. ये मिट्टी का दीवार था, and it was done with vegetable colors. It was not done with paints or something, synthetic paints. Okay. And it is basically called what is called Kohbar painting in Bihar, or in North Bihar and in Madhubani. The Kohbar painting is one that you paint for a newly married couple, on the walls of a newly married couple's room. Okay. So now we continue with this again. So basically you look at this, now we come to the Bernoulli. This is Jacob Bernoulli and the golden ratio. So we are continuing with mathematics. He said you look at the square 1, make another square next to it, another 1. Okay, you can see these squares. Then you make a bigger square 2. And then with 1 plus 2, you make a bigger square 3. And with 3 plus 2, you make a bigger square 5. And with 5 plus 3, you make a bigger square 8. So you make these so-called golden rectangles, so to say, or golden squares. And then you start a line, which I will now draw. You draw a line like this, which is a tangent to the side of each square. Ye dekhiye. It's a tangent to the line of each square like this. Okay. This is a spiral. It is called the golden spiral. इसकी भी एक equation है, जो आप अनिल कुमार जी कह रहे थे about exponential growth. Yeah. तो इसका equation है R0 e raised to lambda theta, where theta is the angle in radians. Okay. This is Bernoulli spiral. Okay. This spiral, Bernoulli said, can be found in many things. You look at a rose, you look at a shell, you look at a sunflower, or you look at the spiral galaxy. All throughout, you find this. Okay. All right. Now, am I clear, or is my voice clear? That's what I want to know. Yes, sir, it is clear. Thank you very much, Anil Kumarji. Okay. So let me continue. And golden ratio jo hai, then now comes the questions. Golden ratio is found in mathematics, golden ratio in aesthetics. What about physics? In physics, you find golden ratio, but very rarely. Very rarely do you find a golden ratio. And there is one equation, there is one problem. It is treated in the American Journal of Physics by Srinivasan in 1992. He says you can consider a network of resistors. ये resistor है, ये resistor है, यहाँ भी एक resistor है, and you say it's an infinite network like this. Sorry, मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा है, age हो गया है मेरा. I've become old. So you take these infinite resistors and you try to calculate the effective resistance between A and B. Okay. When you calculate that effective resistance and you divide it by R, which I have done over here, R effective by R, once again, you'll get the golden ratio. So how do you do this? What you do is you remove all of this that I have made. Okay, clear this. So I'll clear that now. Clear all of this and replace this infinite resistor right here. Very much like what you hear in the Ishavasya Upanishad. When you take infinity, Purna, and you remove Purna from Purna, you're left with Purna. Okay. So if you add Purna to Purna, you get Purna. So you add infinity to infinity, Purnamada, Purnavedam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnameva Vashyate. So that trick you use, that trick is actually due to Ramanujan and many other mathematicians, that you just replace this infinite resistor with this. So you get the golden ratio there. Okay. You also get it for infinite capacitors. I will not work it out for you, but you can get it. By the way, this working out is very easy.
you take this is R, यहाँ R किए हैं, and this resistor R and this one effective are in parallel. So you just treat them in parallel as I have done over here. Okay, and you can get this answer. बहुत simple है to get it. Okay, right? But now I'll tell you something interesting. Unlike the number pi, which you find all throughout in physics, whether it is the simple pendulum, whether it is Bohr's quantization rule, okay, or whether it is whatever, you'll get pi. And unlike E, the exponential, okay, which you get in radioactive growth, decay, sorry, bacterial growth, expansion of the universe, the golden ratio is not found very often in physics. Okay. So now I will tell you that 4 years ago, 4 साल पहले, two of us found one place in physics where golden ratio occurs again and again and again, and it is all at the 9th standard level. So let me change gears. I'll talk about the center of mass. So golden ratio की मैंने बात कर दी, कुछ aesthetics की बात कर दी आपके सामने, और अब मैं थोड़ा सेंटर ऑफ मास की फिजिक्स की बात करता हूँ. वो भी 9th 8th स्टैंडर्ड लेवल की ही करता हूँ, उससे ऊंचे की नहीं. तो by the way, let me clear this again. I've cleared it. How do we find the center of mass of a laminar body? What is a laminar body? एकदम flat body. जैसे इसको आप देख लीजिए, ये laminar body है, the flat body. Okay. You find it by what is called the knife edge method. One way, not the only way, by the knife edge method. Okay. You see where it can be balanced, and you say, okay, that is the center of mass. Like I've done it over here in this figure over here. Okay. Of this body, the center of mass is at O because it will balance at O. Okay. Of this triangle, which is an equilateral triangle, the center of mass is at the centroid. This all 8 standard students know. That is how they will find the center of mass of this. Supposing I take this very complicated body, I will find the center of mass. I'll see where it is balanced. I find that it is balanced here. यहाँ हमारा पंखा चल रहा है, but it will be balanced here. So this is the center of mass. This edge point. Okay. Center of mass, say for the human body, how do we find it? ये है हमारा knife edge method. The center of mass is right here. You do the Mayurasana. The Mayurasana is balanced. You balance just above the navel. That is the center of mass. इसको knife edge करते हैं. A very important use of center of mass to win a gold medal was employed by a person called Fosbury. Fosbury was how should I put it? A high jumper who revolutionized high jumping in 1968 Olympics. What he did was, instead of jumping forward like a horse, he jumped backwards like an eel, सांप जैसे. What he did was, by doing this, his center of mass, which is right here, is as close to the bar as possible. If he were to jump forward, his center of mass would be somewhere here. Okay, so that is how he achieved another 1 feet advantage, and he got a gold medal. After that, everybody and his brother started doing the Fosbury flop. Otherwise, you would never win a medal. Okay, here is another great athlete. His name is Edwin Moses on the left. Okay, Edwin Moses is known as the greatest hurdler of all times. He is a BSc in physics. He used his physics knowledge to keep his center of mass as close to the hurdle. And he counted his steps to the next hurdle in such a way that his center of mass would be as low as possible. And he won gold medal after gold medal. After that, everybody doing that his 110 meter or 440 meter hurdle in the way that Edwin Moses did it. Okay. Here's another example of center of mass. This is the beach of Juhu in Bombay. Here is a kid. He's balancing himself. Intuitively, he knows where his center of mass is. Right. Here, this is the Bombay Darshan bus. Okay. Everybody is on top trying to see Bombay or Mumbai. And this is a wrong use of the center of mass, because the center of mass is way up here. The bus is very unstable and it is going to fall. Okay. And if that happens, you are going to die.
So I would never advise you to see the Bombay Darshan bus or to stand next to it like this motorcycle or drive next to it. It can fall anytime. Okay. So that's center of mass again. Center of mass again right here. Here is the center of mass. Here is a very heavy child, very close to the center of mass, and a very light child, young girl child, far away from the center of mass. That is how they are balanced here. Heavy object close to the center of mass, light object far away. आप कहेंगे कि इसका यूज क्या है? हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका यूज अभी भी होता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, in a very interesting way, to find planets belonging to other stars. और भी तारों के साथ ग्रह जुड़े हुए हैं, उसको इसी तरीके से पाया जाता है. जैसे कि ये देख ले आप, ये स्लाइड हिंदी में है तो इसके लिए आपको थोड़ा हिंदी पढ़ना होगा, लेकिन मैं समझा दूंगा. ये है स्टार और ये है प्लैनेट. जब प्लैनेट यहाँ है, द हेवी स्टार इज स्लाइटली टू द साउथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास. व्हेन द प्लैनेट कम्स हियर, द स्टार विल मूव हियर. ओके, सो इट विल वॉबल. इसको कहते हैं वॉबल मेथड. वॉबल मतलब थोड़ा झूलते रहता है ये. तो हम दूर से जब देख रहे हैं पृथ्वी से, from a satellite close to the earth, when we watch this, we don't see the planet. Planet is very small, but you see the star wobbling, and while it is wobbling, it is giving out light. So when it is wobbling towards you, you will see blue light. When it's wobbling away from you, you see red light. That is how you know that there is a planet associated with it. Time period of the wobble will give you the distance of the planet from the star by Kepler's law, and that's how you do all this. Okay, right? Look at this. It's got wonderful bilateral symmetry. Basically, आपको दुनिया देखनी चाहिए. You should see the world. When you look around, every object has bilateral symmetry. This leaf has bilateral symmetry. The butterfly has bilateral symmetry. Your body has bilateral symmetry. You have one eye, you have another eye. One ear, another ear. One hand, another hand. If you didn't have it, you would be unbalanced and you would fall. Okay, likelihood of fall is greater. Okay, same thing with this very beautiful animal, the peacock. It is actually symmetric about the center of mass. All this. Or you look at this ballerina, she is perfectly balanced here on the center of mass. If she moves her leg out here, she has to move the hand slightly on this side so that the center of mass is just below the toe. It coincides with the toe. So many uses of the center of mass. Okay. So I've told you about the golden ratio. I've told you about the center of mass. Now let me come and tell you something very interesting. How do you calculate the center of mass? आप कहेंगे बड़ा simple है. If you take two objects, one 2 kg and one 4 kg, and supposing you are at the origin, okay. Origin is right here. You say the center of mass is nothing but m1x1 plus m2x2 divided by m1 plus m2. What is m1? 2 kg. What is x1? 1 meter. So that's what I do, 1 meter. What is m2? 4 kg. How far is it from the origin? 4 meters. You do that, you'll get 3 meters. So the origin is right here. That is one way of finding. There is an easier way of finding. There is actually an easier way of finding this. And the easier way is this. You imagine you are at the origin. Okay. This is the center of mass is at the origin. The origin is at the center of mass. So the origin is right here. We don't know where it is, but it's there. And it is at a distance x from the 4 kg mass. Since the distance between the 4 kg and the 2 kg mass is 3 meters or 3 centimeters, whatever you want, then this distance from the center of mass to the 2 kg is 3 minus x. So you have 4 into x minus, why minus? Because on the opposite side, 2 times 3 minus x, that is 3 minus x. Solve it, you will get x equal to 1 centimeter. Finished. So you simply get the center of mass by set. There's no need to take the denominator, which I did in the previous one. Previous one, I had to take this denominator and calculate it. But if you pretend that you are at the center of mass, and that is your origin, you don't worry about the denominator. You simply set the numerator to 0.
ये सभी बच्चों को पता है। तो नव आपको एक नई बात बताते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर नाउ, स्क्वायर लाइक दिस इज अ स्क्वायर, ओके, and where is the center of mass of the square? Right here. If I move and cut out a part of the square from it, where will the center of mass go? It will go inside, diagonally down. If I make a bigger cut like this, the center of mass will come down here. दिख नहीं रहा है, but it will come down there. Correct? Now let me see if I can choose a color. I think I can choose the color. It will come down here. That is if I cut it like this. So in a very important national entrance exam at the 11th standard level, we asked this question. We asked this question that if I take a square of side A and I cut another square from it, how much should the cut be so that the center of mass is right at the edge? Edge पर होना चाहिए. तो A by H की क्या ratio होनी चाहिए थी? I am calling it B here. This H should have been B. B होना चाहिए था. इनकी क्या दूरी, क्या ratio होनी चाहिए? It will be at the edge. I think you know the answer. You will say it should be, because the talk is on the golden ratio. The answer is it should be the golden ratio. Okay. Right. So now आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना है. गोल्डन रेशियो 1500 साल पुराना है, 1500 years old. Center of mass, we all know intuitively what it means, but mathematically is at least 400 years old since Newton's Principia. Correct? And laminar bodies we know for a long time, at least since Euclid's time or since Aryabhat's time, we know about laminar bodies. So all these three things are known, but a very important property that this ratio should be such that the center of mass should be at the edge was not known until 4 years ago. What should have been known 400 years ago was only discovered 4 years ago. Okay, so answer तो ऐसा है कि कुछ समय का अभाव भी है, और मैंने आपको अपना I have given you my email ID, so you can always write to me. I will send you this calculation. If you do this calculation, you will find that A by B, ये B है, और ये A by B should be equal to the golden ratio if the center of mass has to be at the edge. Okay, and अगर ये एक ही किस्सा रहता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती. It wouldn't have been a big thing. Okay, but I took a circle. I did this work with a student, Praveen Pathak ji. I took this circle, I removed a small circle from it and kept removing circles in such a way that the ratio of the radius of the original circle and the removed circle is this golden ratio. I can balance it at the edge. That is to say, अगर हम golden ratio के अनुपात में करें, then I can balance it at the edge. So this property is not just for a square, but it is also for a circle. Okay. ये कैलकुलेशन है उसका, ठीक है ना? एंड कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. यू जस्ट डू सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी माइनस द मास ऑफ द रिमूव्ड बॉडी. दैट इज होल बॉडी मास है, रिमूव्ड बॉडी मास है, उसको जीरो कर दीजिए. कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का रेशियो ले लीजिए. यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose solution is the golden ratio. ठीक है? एंड हियर आई एम शोइंग यू अ पिक्चर ऑफ माई सेल्फ. ओके, तो थोड़ा सेल्फ एडवर्टाइजमेंट हो गया यहाँ पर. ओके, विज्ञापन हो गया यहाँ. तो आई कैन बैलेंस इट ऑन द एज. In fact, what I do is when I go to 5th standard student classes, when I'm told to give a lecture there or 6th standard, I make them do this cut. उनको काटने को कहते हैं, उनको काटने को कहते हैं, उनको कहते हैं इसको बैलेंस करो और फिर ये रेशियो नाप दीजिए. ठीक है ना? वैसे ही हम उनसे बर्नौली का स्पाइरल भी बनवाते हैं. तो ये सब एक्टिविटी हम कराते हैं जिसके थ्रू I teach them center of mass. Okay. Now the interesting thing is if you take the square and you make a vertex excision. What is meant by vertex? हम side या vertex से ऐसे काटे. Or you make a midpoint excision like this, like what I have done here. Whichever way you do, जैसे भी चाहे, जैसा जो चाहे वैसे कर लो. A by B will be, when A by B is the golden ratio, you can, center of mass is at the edge.
center of mass is at the edge. Okay. You take now, most interestingly, you take a polygon, even-sided polygon, like I'm showing you here. Yeah. इसको भी वैसे ही आप काट दीजिए. You take the ratio of the long side here, divided by the ratio of the small side. If the ratio is the golden ratio, then once again you can balance it on the edge like this. हम कोशिश तो करते हैं बैलेंस करने का. हो गया, बैलेंस हो गया, देखिए. So this is all very nice, okay, and very interesting. Of course, you take a polygon, whether you make a, let us say, whether you make a vertex excision, vertex से लीजिए या midpoint से लीजिए, same answer. So this is a universal quality now. Then you take a rectangle. Once again, if in this rectangle, I will not show you this calculation. I can share it with you later. If you take A by A prime and B by B prime in the ratio of the golden ratio, then you can balance it at this edge. One second. So, you know laminar bodies for a long time, but this property was not known until 4 years ago, or 5 years ago, I would say. Okay. वही नहीं, आप rhombus ले लीजिए, आप ellipse ले लीजिए, take whatever you want, you will get this property. So this is called in physics universality. तो लोग कहेंगे कि इन्होंने यूनिवर्सैलिटी का पता लगाया है कि ये सब जगह होता है, एक ही जगह नहीं होता है, आइसोलेटेड केस नहीं है, ये सब जगह पता होता है. ठीक है. तो जब ये हुआ तब हमने ये पेपर यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में भेजा छापने के लिए. So we sent it there and it got accepted in 1 week because the editor said this is such a strange and new result and this result should have been known 400 years ago, but it was not known. Not only that, the fashion industry makes a big deal about the golden ratio. They say that if a woman's body, if the model's body is proportioned as per the golden ratio, ऐसे करके, then what will happen is that is the perfect model. तो उस आधार पे उन्होंने घोषित किया है और आप जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर. ये ब्लू बेला है, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है फैशन की. ब्लू बेला ने घोषित किया कि स्कारलेट जोहानसन इज द बेस्ट लुकिंग मॉडल. नंबर 2 पर किम कार्दाशियां है और ऐसे ऐसे कई लोग हैं, दिग्गज लोग पड़े हुए हैं. तो उन्होंने भी हमें एक चिट्ठी लिखी कि आप अपना पेपर भेजिए, आपने जो लिखा है. ओके. तो हमारे कहने का एक मकसद है स्टॉक देने का, लेकिन वो बाद में आपको बताते हैं. तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप लीजिएगा and you demand that golden ratio, that the center of mass be at the edge, then the ratio of the big side, which is A, to the small side, which is B, A by B, will give you this equation. X square minus X minus 1 equal to 0. Okay. So then we said, what about 3 dimensions? When you take 3 dimensions and you demand the same property, that the center of mass be at the edge, then you get this equation. Look at the structure, x square minus x minus 1, you get x cube minus x square minus x minus 1 equal to 0. So now we are back to mathematics again. Okay. Now if it's a cubic equation, we all know that one set of solutions is a real solution and 2 complex conjugates, which I'm showing you here, 0.41 minus 0.6, 0.41 plus 0.6. Okay. What about if you take a 4-dimensional object? If you take a 4-dimensional object and demand the same property of being at the edge, you will get not just x square minus x minus 1 or x cube, you get x4 minus x cube minus x square minus x minus 1 equal to 0. And you get one solution. Here it is 1.618. I will just write it here. 1.618 है. ये 1 नहीं आ रहा है, लेकिन हम लगा रहे थे 1.618. Okay. इसका है 1.82. Iska hai 1.92. Okay. And when you look at an n-dimensional object, this whole thing moves from 1.61 to 1.8 to 1.9 to 2. It has a limiting ratio. But the more interesting thing we found out mathematically, physics ab ho gayi, कि इसकी complex solutions बहुत interesting हो रही है. This is how the complex solutions look. Okay. They become a perfect circle as you go to very higher order equations like x to the power 512 minus x to the power 511, etc.
If it's something less, you get this kind of a solution. All the complex equations. Right? So iska abhi we have not studied this further. If any student is interested, 11th standard, 12th standard, I'll be happy to tell him how to do this. Go ahead and do some calculations, which will also get him an international publication. Okay. So here is the golden ratio again. इसको Jacob Bernoulli ने, अब हमारी भाषण, I have talked, physics is over. Now I'll make some concluding remarks. There is some golden ratio here in some drawing that I have seen in India. Very interestingly, the falcon, जिसको शाहीन कहते हैं, जब वो अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, तो when it falls, it moves with very high speed. उसका भी spiral जो है वो golden ratio होता है. And that was experimentally confirmed. And there's an article in the Journal of Experimental Biology in 2002 on this. Okay. क्योंकि हम बच्चों से बात कर रहे हैं इस मामले में और टीचर लोगों से भी, there are other center of masses that you must know. There's something called the center of buoyancy. और कई joint entrance exam के सवाल हो चुके हैं इस पर center of buoyancy पर. तो जो पार्ट डूबा हुआ है उसका सेंटर होगा, उसको center of buoyancy करते हैं. There is something called the center of percussion. Anybody who has played cricket will know what this is. How to get rid of this harm. Oh my God. Can you see this? Oh, maybe not. So anybody who has played cricket will know about the center of percussion. If the ball hits the center of percussion, there is no reaction at the wrist. The ball goes to the boundary effortlessly. That point where there is no reaction at the wrist, at the joining point or at the top point, is called the center of percussion. When you talk about Rafael or these light combat aircraft, there is something called center of pressure. Center of pressure, Bernoulli's principle se aata hai. There is center of mass. The air downstairs is moving at a much lower velocity, so it has higher pressure. So there's an upward pressure, which is called the lift. The place where it acts is called the center of pressure. And the interesting point, the मजेदार बात तो यही है कि center of pressure, always these combat aircrafts में, the center of pressure is always outside the body. ऐसा it always flying in an unstable mode, whether it is a Rafael or the light combat aircraft. Okay. Speaking about center हमारे इतिहास और हमारे लिटरेचर में, हमारे साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण जगह रखता है. ये यीट्स की पोएम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में. जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन. थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड. सेंटर की बात, हम सेंटर फॉरवर्ड की बात करते हैं, हम सेंटर पीस ऑफ अ फर्नीचर की बात करते हैं. द सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट इन फिजिक्स बट इन एस्थेटिक्स ऑल्सो. There's another quote by another very great Native American speaker, Black Elk. वो लीडर था उनका वो अब तो वो रहे नहीं, तो वो कहीं देखिए वो कैसे सेंटर की बात करते हैं. अब people's dream died here. It was a beautiful dream. Okay. The nation's hoop is broken and scattered. हम टूट पड़े हैं. There is no center any longer. वो भी सेंटर की बात करते हैं. तो साहित्य में भी और इतिहास में भी सेंटर की बात होती है. ओके. और हमारे उपनिषद में भी एज की तो बात होती ही है. We talk about the edge. This quote basically is from the Katha Upanishad, Shurashya Dhara. That is, walking the path of spirituality is like being on the edge. That is what they say. So the center is important and edge is important. Okay. So lastly, but not leastly, what I've tried to show students here and even some teachers, two-dimensional structures have been around since time immemorial. Laminar bodies तो हम जानते ही हैं कई सालों से. So has the golden ratio. इसको भी हम जानते हैं 1500 साल से. So is the notion of center of mass. इसको भी जानते हैं कई वर्षों से. But nobody seemed to notice this connection. तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ज्यादा पढ़ना लिखना सही है, लेकिन आप एक ऐसा कुछ सोचिए while you are solving the problem, whether you are discovering a new result. Okay. And this is a new result at the 9th standard level. Okay.
we have found systematic occurrences of phi in physics. Whether it is a polygon, whether it is a circle, you will find the same thing. And then we have generalized it to higher dimensions. So we get a whole sequence of numbers, 1.618, 1.82 as a solution of a cubic equation, x cubed minus x squared minus x minus 1 equal to 0, etc. Okay. And this is the main paper, the European Journal of Physics in 2016. This is a report which appeared in the Times of India around, because it made such a big noise in Europe that the Times of India also reported it on its Sunday edition. और विराहंक का सीक्वेंस कैसे आया वो हम, और एक स्टूडेंट है निवेदिता, वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, हमने लिख के एक लेख लिखा है बुलेटिन IIPT 2020। तो इससे मैं कहूँगा कि हम टीचर लोग जब जाते हैं बात करते हैं तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स IIPT इज डूइंग, आप सब IIPT के मेंबर बने, ओके, और अपना योगदान दे, और छोटी मोटी वस्तुओं में भी अच्छा रिसर्च पॉसिबल है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। ओके, दिस इज माय ईमेल ID, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, राकेश द्विवेदी जी, अपर्णा दीक्षित जी, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं जो वेरी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, सत्यप्रकाश जी थे, डैनियल जी थे, डॉक्टर HC वर्मा ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for the connection of physics with the day-to-day practice, and right from arts to gallery and the nature as well. Nature follow its key. Why the speed of that particular insect increase when it adopt the ratio of the golden rule. So till date, we have a history of Renaissance. There are 5 Renaissance, and last one is our Indian Renaissance in before freedom struggle. Raja Ram Mohan Rai was leading that Renaissance. समाज सुधार वेस्ट बंगाल और उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, उसको 5वां पुनर्जागरण काल कहते हैं। और मोनालिसा का जो फोटो है सर, दिस वन इज द 3rd Renaissance in the history of culture. और उसके बाद से सर, I myself is very much thankful to you. We have read so many times this Fibonacci series, but this Fibonacci series is basically connected with the 6th century BC. This was AD, 6th century AD. Yes, sir. Sorry. This is a fantastic information for me myself, and I have this one is the ratio is coming from sunflower and some beauty model. This is the golden ratio. So with all these things, I thanks to Dr. R.K. Dwivedi sir, you have also maintained. Yes, sir. एक चीज करना चाहूंगा कि yes, please. कैसा कनेक्शन है इंडियन मैथमेटिक्स से, कॉम्बिनेटोरिक्स से, जी वो सर, आप कृपया, बहुत सरल आर्टिकल हम लोग लिखे IIPT के बुलेटिन में मार्च में, जी सर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कनेक्शन है। हाँ, तो आप लोग कृपया उसको पढ़िएगा, तो बहुत सरल आर्टिकल है, वेरी सिंपली रिटन, क्योंकि हम चाहते थे कि सभी लोग इसको समझे कि हाउ फ्रॉम इंडियन मैथमेटिक्स वी गॉट द गोल्डन रेशियो। यस सर। So I thanks to Dr. R.K. Dwivedi sir. Please, you have arranged the first session with the view of the bilateral symmetry by inviting 2 stalwarts, first HC Verma sir and then commander of the Fauj. As I said, sir, HC Verma sir producing physics teacher के फौज, तो दूसरे हमारे physics teacher फौज के commander Vijay Singh sir. So you have very well managed this bilateral symmetry in the session also. So for these words, I thanks to both the speakers that they have enlightened us, the physics participants in this faculty development program, and they continuously think about this direction, that if you are doing anything, so try to correlate to find new things from that particular small beings. Thank you, sir. Thank you very much. And thank you, Dr. Aparna Dikshit ji. You have given me the chance to do this
job in this session. And thanks to all. Thank you, sir. You're most welcome, sir. Please. Thank you, sir. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. I'm audible to everyone? Yes, yes. Yes, sir. Okay. So let me first thank Dr. A.K. Singh, sir. आपने दो स्टालवर्ड्स के सेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज किया, बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम को आगे किया। मैं भी इसमें एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले विजय सिंह सर का एक टॉक सुना था जो उन्होंने कोविड-19 और मुंबई के हिस्ट्री को आपस में जोड़ा था, और मेरे हिसाब से दैट टॉक वाज जस्ट द फैंटास्टिक टॉक आई हैव एवर हर्ड। सर को याद होगा विजय सिंह सर का, वो बिल्कुल अलग ही टाइप का टॉक था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड थैंक यू ए.के. सिंह सर। अभी हम आपको दोबारा सुनेंगे आपके टॉक में, आज तो आपको एज ए चेयरपर्सन ही हम लोग सुन पाए थे। सो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाउ लेट मी इनवाइट डॉक्टर अपर्णा दीक्षित टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you so much. Am I audible? Yes. Yeah, you are clear. तो आज की शुरुआत में एक संस्कृत के श्लोक से करना चाहती हूँ। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संचया। अर्थात भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थात हमें अपने जीवन को इस तरह से जरूर संवारना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आगे आने वाले समय में हमसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग ले सके। ओके, लेट मी कंक्लूड द सेशन from here on behalf of all team members of the organizing committee of this FDP. I would like to pay my sincere thanks to our guest, Chief Guest, Honorable Vice Chancellor, Professor Vinay Pathak, sir. He always encouraged to all educational activities by which we enhanced our standards of day-by-day teaching methods. We always look forward to him as our role model. We can see his major attraction towards education system, digitalization of evaluation system, quality improvement programs, and lots of quality competitions for students' point of view. In these adverse situations of pandemic, he has translated the crisis into opportunity, and to his credit goes the conduct of 150 plus webinars in the last 3 months. Now, I would like to pay my wholehearted regards to Padma Shri, Professor H.C. Verma, who is an Indian experimental physicist and emeritus professor of IIT Kanpur. He always motivates students and faculty members to conduct difficult concepts in a regularly easy manner of experiments. We are very blessed to have such a person of simple living and high thinking. Now I would like to share one important thing with all of you. When I born, he completed his doctoral degree in the same year, 1978. Today I came to know from Professor Anil Kumar Singh. Right, I am talking about प्रोफेसर विजय कुमार सिंह। मुझे ऐसा लगता है सर आपके बारे में शायद मुझे ज़्यादा कुछ कहना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, तो फिर भी शायद मैं छोटे होने के बावजूद भी आपके बारे में थोड़ा 1-2 लाइन तो बोल सकती हूँ। वी कैन सी योर ग्रेट एफर्ट्स एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर Science Olympiad at Homi Bhabha Center for Science Education Mumbai, which is a prestigious, obviously prestigious program of the government of India. Under his stewardship, the Indian team has won large number of gold medals in the international Olympiads in physics, chemistry, and biology. I would like to pay my sincere thanks to Principal Professor Joseph Daniel, Christchurch College, Director Professor Sanjeev Kumar Balla sir, Ranveer Singh Institute of Technology, and Director Professor R.P. Sharma sir from Feroz Gandhi Institute of Engineering and Technology for their continuous encouragement and support and guidance.
being PSITN, I would like to say that our director, Sir Professor Sanjeev Kumar Bhalla, always encouraged us to conduct educational activities at PSIT and over the globe also. I must say very sincere thanks to Professor R.K. Dwivedi sir, who is the president of IAPT RC4 region in UP, for his continuous support of day and night. And I, Aparna Dikshit, pays my sincere thanks to Professor Satya Prakash Singh sir for his guidance and comparing session in today's inaugural session of FDP. I would like to pay my sincere thanks to session chair, Professor Anil Kumar Singh, to spare his tough time in this session also. Now, I would like to give special thanks to Dean, Deputy Examination Controller, AKTU, Dr. Ashutosh Dwivedi sir, for being with us since last week. वैसे तो मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ, शायद हम लोगों ने PhD साथ ही शुरू करी थी. हमारा पहला national seminar हुआ था. We were presenter in DAV College Kanpur. So I was also worried about that seminar because I was a presenter at the first time. So I just came to know him about at the first time there. But मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहूंगी. आज के इस सेशन में सर आज ही नहीं, पिछले एक महीने से शायद हम लोग actually he is working like a bridge among us and AKTU. So it was a very difficult task for him also because he is very busy person in AKTU. Okay, sir. Now I would like to give a special thanks to entire team of AKTU for technical support, especially Neha Srivastava ma'am. Last but not least, I would like to say my special thanks to my colleagues, organizer of this FDP, Dr. Ramesh Sharma sir, Dr. Anita Shukla ma'am, for their hard work of day and night along with me. And a special thanks to all entire physics department of Christchurch College and physics department of Pranveer Singh Institute of Technology and of Firoz Gandhi Institute of Engineering and Technology. So this was my vote of thanks. I have an announcement for participants. This is my request to all registered participants. They must be welcome in the evening session of FDP at 5 p.m. Please be there at 5 p.m. This is my humble request to all of you so that we will make it very meaningful, this FDP session for all the attendees. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. फिर मिलते हैं शाम को. Yes, sir. Definitely, sir. Can we leave the meeting now? Yes, sir. Yes. Please. Sure. नहीं, हमने आपको सुबह नहीं सर, हमने सुबह जो है आपको एक वो भी कर दिया था. हमने इन्हीं को कह दिया था कि आप भी कर दो. मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था कि सुबह. हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, जब एक कर दी लेकिन सर दो बताएंगे आप इनॉग्रेशन हो गया. इतना
बढ़िया बोलते हैं और सिंपल भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, और वो तो कुछ बोले ही नहीं आया, बहुत खराब ऐसी बात समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। हाँ वही। हम्म हम्म आज तो हमारे हमारे डिपार्टमेंट से तो रवि नंदवाला बाद में ज्वाइन किए थे, थोड़ी देर के लिए किए थे, बाकी तो शुरुआत में तो नहीं थे, तो अपने ही कॉलेज से बहुत कम लोग थे। हाँ 2.5 मंथ लेकिन बहुत अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, मैसेज तो आ गया है सर, इस कॉलेज चलना। हाँ तो हमें भी लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे जो भी। चलिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बस, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। सर तो शाम के सेशन में तो मैं आपको जो है वो पहले तो गेस्ट को क्या वेलकम करके, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स है आगे वेलकम करके फिर आपको इनवाइट करेंगे आपको। हाँ हाँ इनको। अच्छा ओके। हाँ हम्म 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 हम्म। अच्छा, ठीक। तो हम लोग भी 4:45 ज्वाइन करते हैं ना सर? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो हम स्टार्टिंग कर देंगे, आपको बुला देंगे फिर आप। ठीक सर, ठीक ठीक सर, ओके ओके। भैया काम खत्म हो गया, अब सबको चार्जिंग पे लगा। ओके हो गया। तो मॉम का भी फोन आया था अच्छा आपके बारे में। 69% है अभी। अभी जो मीटिंग